Okay. तो 5 ग्रुप से टॉक्ड अबाउट कस्टमर सेगमेंट, 1 ब्लॉक ऑफ लीन कैंवस, राइट? तो आप लोगों को मैंने कहा था आप इवैल्यूएट करते कि हु व्हिच ग्रुप वाज क्लियर, ठीक है? आपको अपनी जगह नोट करना है, मोस्ट क्लियर, द बेस्ट वन। मैं समझाया हु आर वेरी क्लियर अबाउट द कस्टमर पर्सोना, कस्टमर सेगमेंटेशन जिन्होंने सही से करी है, ठीक है? सो जो फर्स्ट ग्रुप है, हाउ मेनी हैंड्स फॉर फर्स्ट ग्रुप, हाउ मेनी हैंड्स फॉर सेकंड ग्रुप, हाउ मेनी हैंड्स फॉर थर्ड ग्रुप? लेट्स डू इट फॉर फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की सबसे बेस्ट थी, रेज योर हैंड्स। ओके, सेकेंड? यू फॉर सेकेंड? ओके, थर्ड? वो तो आपको याद रखना है ना बेटा। ओके, फोर्थ? ये तो एक ही बार बार एक ही ग्रुप ऑफ पीपल हाथ उठा रहा है। फिफ्थ? Okay, so fourth group, right? Fourth group is the winner in this customer segment. So let's move ahead. यही exercise हमें करनी है for all 9 blocks. For that, you need to be very good listeners. Please listen. आप वोटिंग तो करोगे लेकिन जब सुनोगे नहीं तो वोटिंग नहीं हो पाएगी, राइट? और इसके बाद मैं फीडबैक भी पूछूंगी। प्रॉब्लम, अब जहां हमने स्टॉप किया, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो व्हाट, just tell me about the product or a service you are offering, और इसके अलावा what problem you're going to solve. Just 2 minutes. Fifth, sixth group? हाँ जी बेटा, please use mic. What are the customer pain points? पहले अपना प्रोडक्ट और कस्टमर पेन पॉइंट्स के बारे में बोले, सबको बोले और सब लोग सुने। गुड मॉर्निंग मैम। Good हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जितने लोग, जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे लीगल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे एट द स्पॉट किसी लीगल सर्विस की जरूरत है तो मैं इधर उधर जाऊंगी, बाकी सारे लॉयर्स के पास जाऊंगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा मनी वेस्ट होगा। तो जो हमारा ऐप है उसके थ्रू हम जितने भी एनएलयूज हैं इंडिया में उनसे एक एक इंटर्न हायर करेंगे, जिससे इंडिया की सारी लैंग्वेजेस कवर हो जाएंगी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उनसे, हमारा जो ऐप है श्वेत, उसके थ्रू उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ। इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होगा। अगर कोई दूसरे स्टेट का है तो वो अपनी मदर टंग में इनसे इंटरेक्ट कर सकता है। हमारे ऐप से टाइम वेस्ट नहीं होगा इधर उधर जाने में, और मनी भी कम इंसान का लगेगा। Okay. See, my sincere advice to all of you. In between, I'm just intruding. So focus on your lean canvas. What you have written in the lean canvas. Do not explain all the things what you are doing and your product and everything. Take your lean canvas in your hand. Whatever you have worked on yesterday. Top 3 problems. That's it. What are the 3 pain points you're going to solve? That? Because that is going to go in front of the judges. So right now you should focus on what you have written and whether you need some refinement on that. Okay? Be very specific. You don't have to pitch the whole idea and everything and convince anyone. You can just tell us in bullet points. This is the first problem, this is the second problem, this is the third problem. That would be more appropriate. Okay? हाँ बेटा, next group. Next group के leader. हेलो मैम, माय नेम इज नेमत सरा। वी आर टीम जायक्वींस। हमारा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक जैम्स एंड चटनीज, और जो हमारी मेजर 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लीन कैनवस में बनाई हैं वो ये हैं: हाई शुगर कंटेंट, केमिकल रिच प्रोडक्ट, हेल्थ इश्यूज एंड फ्रस्ट्रेशन। और इसमें हम जो बच्चे हैं, आजकल के जो जैम्स और चटनीज आ रहे हैं उसमें हाई शुगर कंटेंट है और केमिकल है, प्रोसेस्ड फूड है, तो उसके भी हाफ हम लोग ऑर्गेनिक और प्योर प्रोडक्ट बना रहे हैं चीपेस्ट प्राइस में। तो हमारे प्रोडक्ट सर्विस ये है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप। हाँ जी बेटा, बताएं। अच्छा, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, माय नेम इज हर्षिंग बघेल। एक्चुअली हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को, द पीपल हु आर नॉट गेट मेडिसिन इन टाइम। तो हमारी टीम है टीम स्काईलाइन, एंड हम लोग मतलब जो लोग हैं जो बहुत साल, एटलीस्ट 5 मिलियन लोग मरते हैं क्योंकि मेडिसिन उनको टाइम पे नहीं मिलती। तो हम लोग मेडिसिन उनको टाइम पे प्रोवाइड कराएंगे, और हम लोग ड्रोन्स बना रहे हैं, तो उन ड्रोन्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। 3 problems, 3 pain points you are solving.
जैसे रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज और हिली एरियाज में मेडिसिन टाइम पे नहीं पहुंचती हैं, उसके कारण बहुत लोग मरते हैं। Okay. Okay. तो Thank you. Next group. हाँ जी. So, hello everyone. This is Team Upgrow, and we are from Ghaziabad. So, we are agri entrepreneurs, and our product is basically a hydroponic structure. Basically, we are diving into revolutionizing this agriculture space, the majorly the vertical agriculture segment, right? So, the pain point that we have identified is the high initial cost because vertical farming is majorly associated with heavy investments. So, our business model works around the rental model of agriculture. So, it's a very different model that doesn't exist as of now. So we are like targeting small and marginal farmers through that space. Second, I'll say is limited R&D in this segment because in agriculture, we have seen very limited research. So because of that, the products are very limited in this space, leading to very so much constraints in this market, right? Third, I can say is scalability constraints because there are some urban structures which are following this hydroponic and smart agriculture, but because this structure is not easily scalable to a setup of 100 to 200 acres, so there is very limited scalability. So we are targeting that, which are edge computing frameworks and methodology. Thank you. वो clear था. How many hands for group first? Okay, for group second. For group third. Many hands. Okay. For group fourth. And fifth. तो फिर आपने हाथ क्या उठाया? आपने हाथ क्या उठाया? अगर फिफ्थ हुआ नहीं तो आप सबने क्या किया? आपने नहीं, बाकी सबने इतने सारे हाथ तो उठे. So you are not listening. So you are not listening. Fifth. So group 3 probably बहुत ज्यादा हाथ for group 3 उठे. Okay, so group 3 is the winner in problem solving. Now unique value proposition, right? Just your product or a service you are offering, 30 seconds on that, and 1 minute 30 seconds for describing your unique value proposition. Group 1. Where did we stop? We stopped there. Up. Hanji, please get up. गुड मॉर्निंग मैम, आई एम प्रवीण दुबे. मैम हमारा आइडिया जो है वो रिलेटेड है फार्मर्स से. जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं बहुत टाइम, मैम वैसे तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा है, बट इसका मैं फेज 1 जो है वो आपको बताता हूँ. कि जैसे कि फार्मर्स जो है वो उनके क्रॉप्स को जो गुड प्राइस नहीं मिल पाता है. दूसरा जो उनको लैक होता है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो चलती हैं, जो उनको बेनिफिट उन चीज़ों का मिलना चाहिए, तो उनको बहुत सारे रीजन जैसे डॉक्यूमेंट अनअवेलेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे रिलेटेड जो हमारा फेज 1 रहेगा वो इसमें हम करेंगे. तो उसके लिए मैम हमारा यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन ये है कि हम एक एंड टू एंड उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि उनके जो स्कीम्स हैं, जो उनकी जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं बहुत सारी, जैसे मैम गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारे प्राइवेट जो फर्म्स होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो भी फार्मर्स के लिए वर्क करते हैं. उससे रिलेटेड और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर वो सॉल्यूशन नहीं, मतलब कि उनको मतलब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने के बाद भी अगर उनको अपने मतलब की स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए फोन कॉल्स वगैरह के प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन या फिर ऐसे करके. और एक हम लोग स्कीम के लिए कंप्लेंट पोर्टल वो हो गया. और मैम ये मल्टीलिंगुअल होगा, मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, जिससे कि इंडिया के जो जहाँ के फार्मर्स हैं इंडिया में, वो उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए. और इनको मैम फार्मर्स को हम लोग बहुत सारे बायर्स का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. Value proposition just. What is something which you are offering very different? 3 तो अगर हो गई तो बहुत बड़ा ये है, ठीक है? Okay. Second group, just 1, 2 or 3 unique propositions you offer. Thank you. गुड मॉर्निंग मैम. मैम एक्चुअली जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है वो वुमेन सेफ्टी एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि मतलब मैम मोस्ट ऑफ द मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें मतलब वुमेन सेफ्टी पे बेस्ड हैं, बट उनमें मोस्टली क्या होता है कि हेल्पलाइन नंबर्स दे दिए गए होते हैं,
और कोई सेफ्टी मेजर्स उनको ये नहीं प्रोवाइड किया जाता कि मतलब उन्हें क्या करना है एक्चुअली ऐसे सिचुएशंस में। मैम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग ऐसे फीचर्स डाल रहे हैं कि अगर वो वुमेन्स कहीं भी इमरजेंसी में है तो वो केवल एक क्लिक के द्वारा वो मतलब सिंगल क्लिक में ही वो अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती हैं। इवन मतलब वो अपने फेवरेट जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो उनको ऐड करके वो उसमें वो रख सकती हैं ऐप में कि वो एक सिंगल क्लिक करें तो उनके पास उनका लाइव लोकेशन चला जाए और मतलब इमरजेंसी अलर्ट चला जाए कि वो किसी भी इमरजेंसी में हैं। एंड इवन इसके साथ पे दूसरा पॉइंट ये है मैम कि हमारे पास उनमें पेरेंटल कंट्रोल होगा कि जो मतलब आजकल के टीनेजर्स हैं उन्हें नहीं पता वो कहीं भी बाहर जा रही हैं तो पेरेंट्स वो उन पे देख सकते हैं वो किधर पे हैं अभी फिलहाल में और कहाँ पे हैं, कहीं मतलब वो अकेले तो नहीं है, चाहे ऐसे सारे फीचर्स उसमें इंक्लूड होंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज मैम उसमें ये रहेगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट मतलब चाहे कोई भी है बाहर जाता है तो उसे ये नहीं पता होता कि मतलब उसका फोन चार्ज या नहीं है और वो मतलब घर पे इन्फॉर्म करना भूल जाता है। एंड पेरेंट्स मतलब उसको लेके परेशान होते हैं तो उसमें लो बैटरी अलर्ट होगा कि मतलब बैटरी एक सर्टेन लेवल से नीचे जाएगी तो भी पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उनके बच्चे का मतलब Okay. Hello. Good morning, ma'am. So, hello, ma'am. I'm Hamish Kumar from Jabalpur, Ganga. We are team Verdict Vaults. So, our unique volume, basically, our solution is we have to develop a AI-based research engine. नहीं, आप सुने, just tell me, spend 30 seconds on the product or the Okay. service you're offering, right? और आप मुझे अपने जो भी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पे भी बोलेंगे. Let me just elaborate a little bit. I just want to hear 1, 2 or at the max 3 things you are offering which is very unique, right? तो आप तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं and I appreciate that. लेकिन because of the time scarcity we won't be able to listen everything. We just want you to tell us about your product and service very briefly, 30 seconds, and unique value proposition. You can have 1, 2 or at the max 3. वो भी बहुत मुश्किल है खैर. Okay. बता, So, हाँ. so the first point is we have a huge data set of approximately more than 3 lakh court cases with their hearing also in our database. So that provides our maximum accuracy of 97%. Also, the second point is this our website or our solution is multilinguistic. This is the main problem in India that the solution is not multilinguistic. So we support 48 plus languages, Indian languages with other languages also like Urdu, etc. And our third main USP is our multi-tiered data filtration process. So this is our patented technology of us where we have divided the given APIs into 4 filtration plans. If you have patented technology, then your patent maybe the one. मतलब you have to be very brief. Okay. So this. So you're done. This basically gives us 85% more legal advantage and reduces 5 times that work than in traditional methods. So this is a thing. Okay, thank you. हाँ जी. Very good This is morning, group fifth? all of you. Fourth. Okay. One. Ma'am, my product is basically a shoe sterilization product, working on a shoe product. So my unique value proposition is my product is a first IoT based, fully IoT based hoga. Second one is the fully automatic, and third one is a unique design, which basically I am a designer and I patented that design. So सबसे main value, unique value proposition मेरे design ही होगी उसके अंदर. That's Okay. it. Thank you. Last group, fifth. हाँ. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. This is Steve Meckel. So our unique value propositions will be, first of all, we're a startup trying to organize all the different garages in the city so that you can get help anytime your vehicle breaks down or something. So one of our unique value propositions is you'll be able to get see transparent pricing of all garages, what the service costs, and also you'll be able to compare it with different garages. So you can choose from people. True. Second will be one of our competitor, Go Mechanic, does this, which is he doesn't provide real time updates of all the services that are going on, but we'll provide videos and photos to the customer so that he'll be able to know what is going on with his vehicle. Thank you. Okay, thank you. Okay, so let's vote first. क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ करना है. For group 1, how many hands? Okay. For group 2?
For 3, 4, 4. Okay. So we did only 4, 5. Okay, 5. Okay, so group 5 is the winner in this unique value proposition. Now we'll talk about solution, right? I request you, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त है नहीं, I would have loved to listen to you in detail. In fact, I have so many questions and so much of feedback. और फराज अब I'm stopping myself क्योंकि मैं teacher भी हूँ तो पता नहीं मुझे stop करने में बहुत परेशानी हो रही है. But then we don't have time, right? So we'll be very, very precise. Please understand, हमें सिर्फ ये बताना है कि product or service क्या है, and at present we have to talk about the solution we are offering, right? That can be a 1 line, 2 line, that's it, right? Okay, group first for solution. नहीं, उधर से पहले खत्म करते फिर मैं उधर आती हूँ. हाँ जी, आपके बाद वाला. हाँ. Good morning, ma'am. Okay. We are Team Figures. The problem we are solving that we are using designer cases, and if we want to change the design, we can't able to do that. We have to buy a new cover for that, and that's where we came with a simple solution that the transparent cases we are providing a slider, a designer card, something that you put in the transparent case, and eventually it will change the design, and it is affordable as well, and you can change anytime anywhere. You just have to change the card that we are providing called sliders. You have to put in the transparent case and eventually it change the design of the case. Very And good. it's a simple idea, ma'am. हाँ, Thank you. Okay, second group. हाँ, हाँ बेटा आप. जी. Good morning, ma'am. Good morning. We are team budding engineers from SRMS CT Bareilly. I Rishabh Verma. We are solving the problem of traffic and surveillance in the night and morning में traffic तो हर time होता है, but surveillance of night by autonomous drone system. One of the solution is no human intervention machine. Second is with the help of logistic regression and linear regression, we are solving the law making जो problem होती है कि कैसे करना है, कब करना है, कितनी time बाद वो action लेना है, वो solve करेंगे. Third and the major solution is that when the crime has happened in the midnight, there's no one the proof of it, but our drone will make a click of the picture at night and give to the authorities at morning when they are looking in the cases by making the red, blue, and green marking. Thank you. Thank you. Third group. हाँ जी. Myself, Mir Fahim, belongs to Kashmir, and my project is about production of oxyhydrogen. We are So, producing okay. the production of oxyhydrogen, and the solution is an initiative approach to generate oxyhydrogen from seawater. And second is providing an alternative fuel sources suitable for various applications such as welding, cars. It will reduce the pollution also. Third is introducing a scalable and eco-friendly solution that minimizes waste and emissions. Okay. Another group? Group fourth. Huh. Good afternoon. Sorry, good morning, Good ma'am. morning. I'm Mananya from Shunli University, and our team name is Caustic. So regarding our problem solution which we are providing, first of all, मैं बताना चाहूँगी जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं अभी वो अंडर प्रोसेस ऑफ बीइंग पेटेंट है. So I can't really disclose our idea, but the solution which we are providing is regarding visualization and 3D content and all, and the target customer is our parents and children. Thank you. Okay. Thank you. Last group. हाँ. Line में बोल दे please. It will be very difficult for me to keep track. Good morning, ma'am. I'm Siddhant and from Bechu, and we have a digital platform named Kamlakar, and our team name is Charlie FOC. So, ma'am, it is basically a digital online platform which specifically promotes the culture of UP and Bihar, which contributed at least 30% to our cottage industries and basically handicraft industries. Our solution basically is to create a platform online and physical stores that connects artisans with consumers and provide customizable, unique handicraft products for home decor, gift, and basically for the
Customized products. Okay, okay. Thank you, ma'am. So we're done with 5 groups. So how many hands for group 1? Okay. For group 2? Excuse me. So many. 3? 4? Oops, sorry, my mistake. 5. So group 2. Group 5. Group okay. But I guess group group 2 के लेके बहुत सारे हाथ उठे तो group 2 for that matter. Okay. Let's do it for another block. Revenue streams. हाँ, जहां खत्म किया उसके बाद से शुरू करते हैं. Revenue streams. हाँ, please. आप जी. Hurry up, quick. Please. Good morning to one and all present Question, here. Bade. This is the question. What are potential ways your business would generate revenue? We want to listen that only, right? Okay. So the revenue, this is Team Prithvi, and the revenue stream for our product will be direct sales and subscription model we have. Next group. How will your business generate money? So good morning, ma'am. Our business will generate revenue by selling products online on e-commerce platforms, and also we will direct sell it over end-to-end consumers, so that we can generate revenue through sustainability and scalability model. Thank you. Okay. 3. Group 3. Hi ma'am, I am Shashank Shekhar Pandey from Team Defenders. हम एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं और वो एक 3-in-1 फार्मिंग रोबोट है. तो वो रोबोट करेगा क्या कि रेवेन्यू ऐसे जनरेट होगा उससे कि हम बिग इंडस्ट्रीज से कोलैब कर सकते हैं लाइक, और हम क्या गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और रेंटल बेसिस से यूज कर सकते हैं. Next group, fourth group. आप हाँ. Hello. Good morning, ma'am. We are Tech Spark. My name is Arpit Namdev. And हमारा जो प्रोडक्ट है वो फार्मर्स के लिए है. सो हम लोग सर्विस उनको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे. लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो, जिसमें हम लोग फार्मर्स को सिखाएंगे कि क्रॉप्स क्या होता है. कई बार डिसीजेस लग जाती हैं तो उसके जगह उनका बहुत लॉस होता है. वी प्रोवाइड अ लर्निंग प्लेटफॉर्म जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहेगा. और So उसके you have बाद हम subscription based revenue यस मैम. model. एंड उसके बाद प्रोडक्ट्स हम लोग जो सेल करेंगे उसके भी हमारा कमीशंस रहेगा. Okay, fine. Next. Good morning, ma'am. Myself Ayush Verma, and my team name is The Achievers, and our idea is an application named MR Saab. And the potential revenue stream for MR Saab is first the subscription fees, which we charge from the pharmaceutical companies or doctors for subscription for access to the platform. And second is transaction fees. We earning a commission on each medical orders placed through the app. And then third is advertising, which the pharmaceutical companies to promote specific medicines within the app. Okay, thank you. Fifth group, last group. हाँ, आपके पीछे वाला ग्रुप जो है. जी. Is there anyone who has worked on lean canvas and want? Khatam, we are done. Okay, pass on the mic to another side. इधर लाएं. One group needs to speak about revenue, then we'll move to another. जी. उसको दे रहे हैं तो वो बता रहा हूँ. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Tapanjit Singh, and we are a team Creamy Maza. We basically deal with ice cream and shakes. If we are talking about revenue model, तो हमारे बेसिकली 3-4 रेवेन्यू मॉडल है. पहला B2C है कि हम कस्टमर को डायरेक्ट सेल करेंगे. सेकंड है B2B कि हम होटल्स और रेस्टोरेंट्स से डील करके उनको देंगे. थर्ड है हमारा B2B थ्रू क्विक कॉमर्स कंपनीज, मतलब क्विक कॉमर्स के थ्रू हम देंगे. यही अभी हमारा. Very clear. Okay. Okay. So how many hands for group 1? No hand.
For 2, 8. Okay. Group 3, 4, 5. Yes, he was okay. Good. Okay, so group 5 is the winner. Channels. हाँ, आपके बाद से शुरू कर लेते हैं. So please tell us about the channels of your business model. हाँ, उठे. Take mic, please. Mic ले लीजिए. Okay. Good morning, group one. everyone. Good We are morning. Team Quick Slot. Our channels will be, we will develop an app for customers, and there will be a social media platform, and we are designing a website to reach out to our customers. Okay, next. Channels. हेलो मैम, माय प्रोजेक्ट इज एआई पेशेंट रोबोट. इसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को विटल साइंस को मेजर करते हैं. इसमें हम चैनल बनाए हैं डायरेक्ट सेल टू हॉस्पिटल, हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस टू ट्रेड शोज, एंड पार्टनरशिप विद मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट ट्रेड्स एंड हॉस्पिटल नेटवर्क एंड एसोसिएशंस. Thank you. Third, group 3. Yes. Good morning, ma'am. This is Abhishek from Team Electroholics. And ma'am, our solution is to design a smart bin which can solve the problem of mixing of waste, and for which we have created a channel of direct sale. We can sell directly to the municipalities and waste management companies which hire tenders for the municipalities, or we can partnership with the smart city initiative programs like Dholira city in Gujarat, and if this initiative starts in any other city. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. 4, group 4. Yes. Channels. We want to capitalize the medical tourism sector in India, which is a $12 billion market currently. And for that, our revenue streams are hospitals. From where we get our customers are hospitals, our website, and through social media, where people want to get medical treatment in India for international patients. As India has one of the cheapest medical facilities and one of the quality medical facilities in the world. Okay. 5th group. How will you generate money? Sorry, what are the channels of the distribution? We are Team Cornerish Health Hub. We focus on improving life expectancy through a comprehensive one-stop solution for various health issues with a strong emphasis on preventive measures. Our channels are social media platform like YouTube, Instagram, collaboration with local health experts and influencers. Okay, thank you. Okay, so how many hands for group 1? For 2? For 3? Many. 4? 5? 4 और 5 ऑलमोस्ट बराबर ही है. ठीक है, जिसके हाथ कम उठ रहे हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली दे नीड टू रीथिंक थोड़ा सा. ठीक है, आपने इसको रिफाइन करने के लिए. नाउ कॉस्ट स्ट्रक्चर. हाँ जी, ग्रुप 1. कॉस्ट स्ट्रक्चर. ओके, वी डोंट एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग, बहुत ज्यादा नंबर्स. सिर्फ व्हाट आर द फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कितना पैसा लग रहा है आपको, जस्ट लेमेन्स आइडिया. जो भी आपको स्ट्रक्चर वगैरह है, विल गेट टू दैट. हाँ. So cost structure for Trash Daddy will be very simple. Like, it is a very heavy operational business. So cost structure for Trash Daddy will be like technological development. For example, we'll have to develop our app and IoT based certain things, AI developments that we have to do probably. And then logistics and operations, right? So we'll have to rent out few vehicles and probably have to buy out few vehicles initially. And then staff, waste collectors, and customer service that we'll have to do. So one corporate office that we'll have to set up, and then एक normal scrap collector का मुझे खर्चा करना पड़ेगा. Then marketing and customer acquisition, that we have to do it. Thank you. Okay, next group. Cost structure of your business. Ji. Good morning, ma'am. Good morning. So our project basically is we are collecting waste cooking oil, especially refined oil from various food outlets, and then we are converting it into biodiesel. Okay. And as for our cost structure, so in total we are gonna sell it at 60 rupees per liter with a profit of 13 rupees. And our refining cost would be 12 rupees per liter and manufacturing cost is 35 rupees per liter. Okay. Next group. हाँ जी, कॉस्ट स्ट्रक्चर के हाँ आप बताएं.
थोड़ा क्विक होना पड़ेगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. We are Team Nexify, and our product name is ForaCam. And did anybody felt curious about what animal this is or what plant this is? So our problem is just solving this. Our solution is this: that we are anybody can scan the image and can get what flora fauna is this, what flora fauna is that. And a cost structure will have, like, we need data. Data is very important, and we need data and data to store. That will be a cost structure, and we'll invest in that. Thank you. थैंक यू. नेक्स्ट ग्रुप. हाँ जी. गुड मॉर्निंग मैम. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम संदीप है और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारसी से आया हूँ. हम लोग का विजन है कि समाज में क्राइम कम कैसे हो. प्रोडक्ट का नाम मार्गदर्शन है और कास्ट स्ट्रक्चर 14 लाख रुपए है. ओके. नेक्स्ट. Fifth group probably. Good morning, ma'am. Good morning. Myself Pradyuman Gupta, and our team name is Coder Pioneers. We are solving the problem in which हम लोग एक ऐसी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं जिसमें जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके वो लोग को फाइंड करने के लिए हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. तो उसके लिए हम लोगों को जो कॉस्ट लगेगी वो है ऐप को मेंटेन करने के लिए कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट. Thank you. So how many hands for group first? For second? For third? For fourth? For fifth? Okay. Group fifth. Okay. Big round of applause. So key matrix. अब जहां हमने खत्म किया वहां के नेक्स्ट वाले ग्रुप से शुरू करते हैं. प्लीज टॉक अबाउट योर की मैट्रिक्स. हाँ जी बेटा. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Prince Kumar. We are generally making a software which will diagnose the problem of a device. It will list up the problems or faults of a device and report on the graphical user interface. Let's listen to him. ठीक है. We need to empathize. अगर आप सुनेंगे तो अभी आपको भी सुनेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो बाकी क्यों सुनेंगे? So please let us empathize and try to help him. Listen. हाँ बताएं. So ma'am, we are making a software which will diagnose the problem of a device. It will list up the problems and faults of your device and make a report accordingly on your GUI platform. So key matrix. Yes, ma'am. Our key matrix is like in tech industries, like many softwares does not have done this in the past years, such as the faults, the small faults which usually is not detected by any software. So we are working on it. And next. Thank you, ma'am. Key matrix. Next group, please. हाँ जी बेटा. Good morning, everyone. Good morning. We are the team of Code Partners, and our product is web designing and development course, especially for the low-income students. Ma'am, our key matrices is a number of students enrolled, course completion rate, job placement and internship conversion rate, student satisfaction scores. Thank you. Thank you. Okay, next. हाँ आपके पास भी आएंगे. Good morning, ma'am. जी, good morning. My name is Rajpratap Singh Parmar, and my team name is Tech Army, and I'm working from Digital Kisan app. This app provide a Kisan to platform which the use to Kisan interact to the government and private companies. And the key metrics is the geographically research, user certification and feedbacks, adoption of agriculture and import services. Thank you, ma'am. Thank you. Next group. हाँ उधर कर दे, वो काफी टाइम से हाथ उठा रहे हैं. हाँ, thank you. So hello everyone, this is Priyanshu from Team Stays. My venture Stays is a student support brand that is focused about providing all the needs of a student while they transition from their school journey to their professional journey. That includes their accommodation, their learning paths, guidance towards what career they should opt, and how they should approach the career. So the key matrices are: we'll monitor the user growth, the number of users we track onto our platforms on a regular basis. Along with that, we'll have a continuous feedback system that will represent the user satisfaction rate, which will help us analyze and enhance more our models more.
The third is conversion rate. We also have student platforms for students to learn about their career paths and connect with mentors and other freelancer advisors. So how much conversion rate is there from students to actual customers buying our services? And then the fourth will be service engagement. We'll have a different system for community engagement where people can post their ideas, their needs, and other peers can help them out. So how much engagement ratio is there? These are the four main matrices of our system. Thank you. Thank you. Okay, next group. हाँ, आप okay बताएं जी. Hello everyone, my name is Adit Mishra. I am from Kanpur Institute of Technology. बेसिकली हमारा आइडिया है सर्विसेज और रिपेयर रिलेटेड है कि मार्केट में मतलब कि जब हमारी शॉप होगी और वेबसाइट है काफ़ी चीज़ें, बट व्हेन वी टॉक अबाउट की मैट्रिक्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि हमारा पहला है जैसे कि नंबर ऑफ रिपेयर्स ऑर्डर्स जितने भी कंप्लीट होंगे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट CSAT उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, मेजर करेंगे, एंड द रेवेन्यू फ्रॉम रिपेयर सर्विसेज एंड रिफर्बिश्ड सेल्स जो आएगा, एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ रिफर्बिश्ड डिवाइसेस जो सोल्ड होते हैं, एंड कस्टमर का रिपीट कस्टमर रेट जो है जो हमारी वेबसाइट पे जो हमारे स्टोर पे जो जिस तरीके से आ रहा है उसको मॉनिटर करना, और एवरेज रिपेयर टर्न अराउंड टाइम को मॉनिटर करना, और ई वेस्ट रिडक्शन जो डिवाइसेस को सेव करना है फ्रॉम लैंडफिल से, क्योंकि एक मेन मोटिव हमारा ये भी है कि इन्वायरमेंट से ई वेस्ट को कम करना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना, एंड यूजर का एक्वाइजेशन एंड रिटेंशन रेट हो गया मैम, और ऑपरेशनल की एफिशिएंसी मतलब मैम पिकअप में और डिलीवरी टाइम में कितना टाइम लग रहा है और क्या चीज़ें हैं, उस पर रिस्पॉन्स क्या है, फीडबैक क्या है, और वहाँ से रेवेन्यू क्या क्या जनरेशन है, और वेबसाइट पे ट्रैफिक और उसका फिर कन्वर्जन रेट मैम. Thank you. Thank you. Okay, so we're done with 5 groups. Okay, so first group के लिए कितने हाथ? For first group, for second, for third, fourth, many, fifth, fourth group is the winner. Okay, very good. Now last one, that is unfair advantage. What is the advantage you have over your competition, and what are the aspects that your competitors won't copy for a longer period of time, right? जहाँ खत्म किया, let's start from there. Unfair advantage. आप कहाँ माइक कहाँ चली गई? हाँ जी, okay. हेलो मैम, मेरा नाम सचिन है और मैंने एक डिवाइस बनाया है जो कि सनलाइट को ट्रैक करेगा बाय मूवमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इसका यूज़ मैं माइक्रो लेवल पे करूंगा, जिसमें मैं छोटे छोटे लेंस यूज़ करूंगा जो कि जो सनलाइट है उसकी हीट से वर्क करेगा और लाइट को फिल्टर करके सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मेरे को लगता है कि सोलर पैनल पे डिपेंडेंट होने वाली है क्योंकि शिफ्ट हो रही है. My advantage is there are so many players in this field, but जो भी लोग चाहते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी में कम यूज कर रहे हैं इसका सोलर पैनल्स का. अपग्रेडेशन हो रहा है पर इलेक्ट्रिकल वे में. Thank you. Next group. जी. Good morning, ma'am. My Good name morning. is Mohammad Mudassir. I am from our team name is Handcraft Leather Accessories. And unfair advantages is there. We belong to Kanpur, and Kanpur is a hub of leather industry. So we are getting the main leather, pure leather, very cheapest cost. So we are providing a leather product with the cheapest cost, and we are using a handcraft doing in that belt, a wallet, and we have having a product. We are also selling our product in market, and we have our prototype is ready, and we are selling in the. Thank you. That is our unfair advantage that we are belonging to Kanpur, and we are, as Very you all know, Kanpur is a hub of industry, leather industry. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Third group. जी. Good morning, ma'am. Good morning. Our idea is IoT based milk vending machine. Hmm. Unfair advantage is मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन होगा हमारे उसमें, एंड सब्सक्रिप्शन सर्विस देंगे, एंड 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगी हमारे उसकी. Thank you. Fourth, group fourth. जी. Thank you. So hello everyone, we are Code Crafter from Lucknow, Uttar Pradesh, and our app is a women safety app as well. As we can see, we are two competitors here, and our unfair advantages, we studied about our competitors and we found lots of gaps as well. I found gaps in our competitors too, so we have some innovative ideas, and we are also going to file the petition after 1 week
in DPIIT. So we have some of the innovations that we are going to patent. So that was our unfair advantage. Thank you. Okay, next group. 1, 2, 3, 4. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Shahid Wasim, and our project is based on automatic water tank refilling system and smart water tank with. So, मैम हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है कि मेंटेनिंग द टेम्परेचर ओवर हेड वाटर टैंक एंड अदर वन इज नो प्रॉपर वे टू नो द वाटर लेवल ऑफ टैंक विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन. मैम इसमें हमारा अनफेयर एडवांटेज ये है कि हम लोग इस पे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें वास्ट मार्केट है विद लेस नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट होगा और पोस्ट पेड फैसिलिटीज देंगे कि पहले हमारे प्रोडक्ट को पहले कस्टमर्स यूज कर ले उसके बाद पेड करें. थैंक यू. Okay, so we are done with 5 groups. हाँ, पहले ग्रुप के लिए सेकेंड, थर्ड, कोई भी हाथ नहीं उठ रहा. एक, चलो आप ही थे क्या? फोर्थ, फिफ्थ. Okay, fourth group seems to be the winner, right? So what we हाँ जीत गए. ठीक है. सो व्हाट वी बेसिकली डिड, ये सब जो हमने 1 घंटा स्पेंड किया, व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज, जो हमने कल पढ़ा पूरे दिन, इतनी सारी मेहनत की आपने, यू डिड वैल्यू प्रोपोजिशन एंड देन यू डिड वैल्यू कैनवस, राइट? तो हमने आपको बोला था घर जाके आप इसको थोड़ा सा रिफाइन करके, एंड वेरी हैप्पी देयर आर सो मेनी गुड आंसर्स कमिंग. मुझे लग रहा है कि हम दोनों का आना कुछ हद तक सक्सेसफुल है, because there was absolutely nothing when we came. And today we can at least see that you have got, if not all, but a lot of clarity. जो भी groups ने जो बताया, there was some element of a positive point, जो मेरे लिए एक motivation है that something good is happening here, right? So, लेकिन please, there's a word of caution. आप लोगों को बहुत repetitions करने हैं इस lean canvas के. जो भी आपके 9 elements है, blocks है, you need to revise it जितनी बार भी possible हो, right? With rich information. ठीक है. तो दिस वाज द होल आइडिया. सो लेट अस समराइज इट. हमने किया क्या? एप्लीकेशन ऑफ द लीन कैनवस फ्रेमवर्क. वी लर्न हाउ टू ब्रेक डाउन these 9 blocks, और ये collectively every block is very very related to each other. Individual में किसी का कोई मतलब नहीं है. These 9 blocks you can just consider that these are the puzzles, और ये puzzles जितने सही से fit होंगे आपस में, उतना सही से आपका जो business है that is going to rock. Otherwise अगर ये puzzles unfit होंगे तो कहीं ना कहीं पे हमेशा friction रहेगी, और फिर problem को जितनी जल्दी पहचान लो, ये सारी चीजें बहुत सही से इम्प्लीमेंट करो तो बहुत अच्छा है. कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग, व्हाट वी लर्नड दैट, कल जब हमने वैल्यू प्रोपोजिशन वाला कैनवस बनाया, आई टोल्ड यू ये वाला साइड आप फोल्ड कर दो. कौन सा? यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर एट दिस पॉइंट इन टाइम, यू आर अ कस्टमर, राइट? तो आप समझ लो आपके बिजनेस के आप कस्टमर हो. तो व्हाट आर द थिंग्स? सो व्हाट वे वी ट्राइंग टू इनकलकेट इज यू आर ऑब्सेस्ड विद योर आइडियाज, एवरी वन ऑफ यू. अभी भी पीपल आर टेलिंग मी सॉल्यूशंस, एंड देन मैं तब से बोल रही हूँ that you need to fall in love with your problem, right? आपको पहले कस्टमर खुद बनना है. You have to have his mind कि मैं अगर अपने बिजनेस का कस्टमर हूँ, what all is that I want to get solved, right? So we have to have a customer thinking approach first, then everything comes after that, right? Problem identification and solution development. Problem को identify कैसे करना है? You need to do lot of research. You need to talk to the customers themselves. आपके दिमाग में है, most of the ventures here are tech-based ventures, right? Technology, very well taken, बहुत सही चीज है. लेकिन उसके साथ साथ you need to understand whether there is a need of this technology at first go. Whether वही आपके pain points, problem identification जब तक आप सोचोगे नहीं, you can come up with the best technology. ठीक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी किसी इसको, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी. People are not takers. So again, you need to identify your problem very correctly. Value proposition development. What is that? Just मैं क्या दे रहा हूँ? Why would a customer come to me and not go to the competitor? Or maybe who is already there for last 10 years. ठीक है, और उनका एक unfair advantage होता है कि उनकी presence होती है, there is a trust, there is everything. That means you have a challenge. ठीक है, उस ट्रस्ट को आपको पार करके जाना है, उसके लिए आपको वाकई कुछ बहुत अच्छा करना पड़ेगा. मैं ये नहीं मतलब, इट्स नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी.
AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसमें मशीन लर्निंग है, ये सब है. बट देन यू नीड टू बी इनोवेशंस आर पॉसिबल इन सोशल. आप कुछ सोशल इनोवेशन कर सकते हो, उसमें तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज ही नहीं होगा. सोशल लेवल पे इनोवेशन हो सकती है, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाट इज दैट विच आई एम गिविंग टू द कस्टमर, जिसके लिए वो 10 साल से जो मार्केट में है उसको छोड़ के मेरे पास आएगा. व्हाट्स माय यूनिक थिंग, राइट? We talked about that. And then strategic decision making, ये सब जो हम कर रहे थे, marketing channels को समझ रहे थे, बाकी सारी चीजें समझ रहे थे. We were trying to be make decisions related to a business, what all we are going to do. And teamwork and collaboration. कल से मेरे पास बहुत सारी teams आई, सर के पास बहुत सारी teams. We were discussing when we went back to our places. तो उसमें एक चीज थी, for example, we have so many engineers. How many engineers are here? Oh, सारी है. Thank you. Okay. How many management graduates, MBA, BBA? So we have, जो मेरी understanding है, we have these two groups largely, right? ठीक है? तो engineering वाले graduates, you have technology, right? But जहाँ मैंने शायद suggest भी किया कुछ groups को, I don't know कौन सा group था exactly. I said you have very good idea, you have very good technology. और अगर मुझे personal level पे suggestion देना होगा, तो I will be your customer. ठीक है, मुझे इस चीज की जरूरत है, यू जस्ट गो एंड डू एन एक्सटेंसिव सर्वे. दे वर टेलिंग मी कि मैम हमने जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, शैल वी सेल इट? ठीक है, किसी कंपनी को सेल करके वो देख ले, लेकिन बट नो, दैट्स नॉट व्हाट यू आर गोना डू. ठीक है, आपको एक वन टाइम पैसा मिल जाएगा एंड वो सब कुछ हो जाएगा, बट उस आइडिया में इतना पोटेंशियल है कि वो आइडिया अगर आप खुद बिजनेस करें, ठीक है, तो आई कैन सी कि वो बिजनेस बहुत अच्छा बनेगा. लेकिन है एक जगह प्रॉब्लम है. यू नो व्हाट, यू नो द टेक्नोलॉजी बेस्ट, बट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड टीम अलोंग. ठीक है, एक इंसान को इट्स नॉट पॉसिबल, एक इंसान को सब कुछ नहीं आ सकता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड ABC ऑफ मशीन लर्निंग, आई डोंट अंडरस्टैंड जो आप मुझे पीछे बता रहे थे उस टेक्नोलॉजी के बारे में, आई एम कंप्लीटली इग्नोरेंट एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके. आई कैन नॉट नो एवरीथिंग. अगर मैं उस एटीट्यूड के साथ रही तो आई वोंट बी. ये जनरल लाइफ के लिए भी है और आपके बिजनेसेस के लिए भी है, तो नहीं हो पाएगा. सो व्हाट you have to do is you have to build a very strong team. For example, if you are technology, you can just club in with some management guy who will tell you, don't sell it, let's do this, let us strategically plan it. जो lean canvas के customer channels है, customer segments है, he or she may help you in identifying that. Right, you will develop a unique value proposition उस जो technology and all that you are using, but then how to sell that, how to move that forward, a management person may help you. Not only management person, आपको देखना है जो आपका business idea है उसमें जो मुझे team चाहिए, कहाँ, where do I lag? या किसी के पास management skills है लेकिन उसके पास बाकी सारी चीजें नहीं है. So who is the person? I have this skill, where would I invest this skill? So teamwork and collaboration के बगैर कुछ नहीं होता जिंदगी में. Forget about startups, right? Okay, time management, again time is इसके बारे में तो time is wealth. Okay, and presentation and persuasion skills, right? Presentation, अब मैंने आपको बोला अभी जब अभी 9 blocks कर रहे थे, I told you just tell me 3 points. For example, about problem. What pain points are you going to solve, right? आपका बहुत अच्छा है, मैं पूरे दिन सुन लूँ आपका ये, but at this point in time, I just need to 3 bullet points आप मुझे बोलो. ठीक है, so आपकी presentation इतनी सही होनी चाहिए, आप सिर्फ वही 3 points मुझे बताओ. ठीक है, एक लाइन में आप मुझे वो 3 points बता दो, so that everything is clear. When you will pitch your idea, अभी जूरी के सामने भी फिर आगे भी जब आप अपना आइडिया पिच करोगे, योर प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू मैटर अ लॉट. अदरवाइज अगर आपकी प्रेजेंटेशन, मैं नहीं बोल रही आपको इंग्लिश में बोलना है सिर्फ, राइट? प्रेजेंटेशन जो आपको बात कहनी है वो बात पहुंचनी चाहिए उस इंसान तक. व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू डू, यू शुड बी एबल टू टेल इट इन अ वेरी क्लियर, कंसाइज. एक बहुत ही आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए. ठीक है, घर पे when you come here or anywhere, घर पे what you do, I would suggest, ये मैं personally करती हूँ. For example, I come here, I never come unprepared. So what I do कि मैं कम से कम 3-4 बार I imagine a group of students in front of me. कोई होता नहीं है, मैं कमरे में अकेले होती हूँ, right? And then I practice it number of times जब तक मुझे अंदर से confidence नहीं आता, yes, I can come here, I can talk. ठीक है, तो वैसे ही जब आप
प्रेजेंटेशन दो अपने बिजनेस आइडियाज की परसों। आई एक्सपेक्ट प्लीज आप पहले यहाँ से जाके फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। ये सारे 9 ब्लॉक्स जो पढ़े, टीम मेंबर्स तो हो ही, 5 लोग हो, जस्ट somebody who is going to present, team leader or any other member, आप लोग सुन लो, उसको बोलो कि आप ये बहुत लंबा बोल रहे हो, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लो, या इस चीज में क्लैरिटी नहीं है, लेट इस, बिकॉज दिस इज टीम वर्क, दिस इज, आप ये बोलोगे टीम वर्क को आना है, टीम लीडर को आना है और वो प्रेजेंटेशन, नो। अगर टीम लीडर आप, ही इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल 4 और ऑल 5 ऑफ यू, राइट? सो उस प्रेजेंटेशन के लिए भी आई वुड एडवाइज गो एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की, ठीक है? तो आप अपनी बात जो है बहुत सही से पहुंचा सकते हो। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैं इनको टेम्पलेट दिखा दूं, टेम्पलेट दिखा दूं, ओके, सो हाँ, नहीं, ओके, चले, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और एड ऑन? हाँ, अभी जो है रेवेन्यू मॉडल्स, डॉक्टर फराज विल टॉक अबाउट रेवेन्यू मॉडल्स। बहुत ही सिंपल हमने रखा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लीज पे अटेंशन। वो आपके लीन कैनवस का ही एक ब्लॉक है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर फराज प्लीज। मैंने इसे शो करा था आज, बस चलिए। वो है नहीं उधर। Hello. Thank you, ma'am, for this valuable insight on this topic. I believe the participants are now equipped with a fresh perspective to move forward. Now, moving on to the next topic of the day, revenue models, importance and impact. To guide us through the session, our expert, Dr. Ahmed Faraz Khan, with his respective experience, will provide us with valuable insights. Without any delay, I invite Dr. Ahmed Faraz Khan to take the stage. Sir, the floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. So I hope now a little bit confidence is there. So at least you have once you have spoken in front of the audience. Let me just tell you one thing before we jump into the revenue models, because now we are getting to the business end of our boot camp, and just there's one day in between and then you have to present. So there are two things to understand. First of all, as of now, there are 77 teams. Okay. So it's a big number. Judges will have very less time for each team. Please understand this. And this is the thing which you have to keep in mind, because you have less time for making an impression. And always remember, pitching will always be very competitive. Okay. And they can grill you on anything. Okay. So be precise when you make a presentation, and just focus and practice it. Because if you don't practice, you, no matter how good a presenter you are, and if you don't practice before going in front of the jury, there are chances that you may fumble, they may not create that impression which you actually envision. Okay. So please practice it. You will have time today also and tomorrow also, little bit of time.
So you can practice it among, have some critical feedback within the group, okay, and let the best man present or women, okay, and also please have a strategy who will answer what, okay. There are some people who will go in technical, answering technical questions, who is a technology person in your team, who is the basically the marketing person, and who is what, okay, the finance person. So please have this division very clear. So all of these things will help you making an impression there, okay. And remember that it will be a competitive, and we are not sure what they will be expecting, what kind of questions they will be asking. There will be people from all different walks of life, okay, all different streams. So we don't know exactly who are the jury members. So they may have some preconceived notions about things. They may have some high expectations also, some very low expectations also. I don't know, okay. So just be prepared for that day, and finally, that best of luck. Present with confidence. I am sure that all of you are already at a very high stage. Okay, it is just this final polishing is required on certain aspects. Okay, and I am sure by this time you are getting some feedback, some formal, some informal, and you are getting an idea that where you are lacking and where you have to make up things. Okay, best of luck. All right, so let us come to the second session, which is revenue model. So we have less time, and I think this topic is also not very lengthy, and so all of you are quite, I think, well aware of what are the revenue models. So we will just, what we will try to do in this session, we will try to summarize all of these things. First of all, we'll quickly understand what is the expectation in this, and especially this revenue model is part of your lean canvas. Obviously, if you in the lean canvas, you cannot have details about this revenue model because the space is very less and you have to be very crisp in the lean canvas. But sometimes you may be asked to elaborate on the business model, on the revenue model, and why are you choosing this, why not this, and all those kind of things. So you need to be clear about this. There are a lot of options. Many of you are talking about subscription and so on and so forth. We will have an overall view of different types of revenue models, but obviously this list will not be exhaustive. You can have more revenue models and it will keep on evolving. Okay, let us open. So you understand what a revenue model is. What is a revenue model? That generates income. Actually the way input comes, money in the form of money in your enterprise, okay, that's a revenue model. So how are you going to convince people to give you money, and in what form? What will be the sources of this, and the manner in which it comes? That is a model. Okay, like the source, maybe you are selling a product and you are receiving some money. Okay, and in what form you are receiving? You may be receiving it as a subscription, and like you said, or maybe a transaction. Okay, a single transaction. You are selling something. You go to a kirana store. They give you some product. You pay for that product. That's a transaction. So that is a transaction based model. Okay. Now it helps us in three things. First of all, okay. First is that we have clarity that how will our business make money. These are the 3 ways or 4 ways or whatever number of ways it will help us make money. Second, who is going to pay for that? Okay, so customer segment, and you match the customer segment with the revenue model. Is our customer segment, like for example, we have to also understand that not all customer segment. You say subscription, and you are talking about, say, someone. Let's take an example. Someone yesterday was talking about an app which was not an app which had a service. I'm not specifically talking about that service because I have to be anonymous about that. But the service was not a frequently used service. So once in a while you may, and the model was subscription. So there is a mismatch here. Okay, and I gave the feedback also that
that's not, because if you are not using this service regularly, nobody is going to pay you a subscription for that. Okay, so you need to be clear that if who is paying and how they are paying. So there has to be a match between them. And what is a pricing strategy? Okay, we'll come to that pricing strategy in a bit, and it requires, I think, more time, but we will have some time, I think. Okay, so we have to very tightly align our revenue streams with the lean canvas. So the alignment, please understand this, lean canvas, we always, we are having very short sessions on lean canvas, but when we teach this to MBA students or in our classes of entrepreneurship, it's a quite a lengthy topic, okay? Because you have to understand that first of all, if you have different customer segments, your value proposition canvas and your lean canvas will be different. For each customer segment, it has to be separate. If you have a platform kind of a business model, so either you in one single business, in one single lean canvas, you very color code the differentiation that this is for the buyers, this is for the sellers. Okay, sometimes you can do it, but if it's getting cluttered, have a separate 2 lean canvases or 2 value proposition canvases for customer segments, because value for one customer segment will be different. For example, in Honey Twigs case, the value for healthy mom is very different from the value which airline will be having. Okay, airline के लिए value different है और healthy mom के लिए value बिल्कुल different है, तो उनके लिए फिर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी लीन कैनवस में. फॉर एग्जांपल चैनल चेंज हो जाएगा, हेल्दी मॉम को कैसे आप अप्रोच करोगे और एयरलाइन को कैसे अप्रोच करोगे, चैनल डिफरेंट हो गया. इसी तरह से प्राइसिंग मॉडल भी, रेवेन्यू स्ट्रीम भी डिफरेंट हो सकता है, किस सेगमेंट के लिए कैसे आप करना, तो ये टाइटली अलाइन होना जरूरी है. और whenever you make a change in the lean canvas in any block, please make sure that all the other blocks are aligned. Okay, it is an alignment. Customer segment से ये सब align हो रहा है या नहीं हो रहा. एक point थोड़ा सा मैं यहाँ पे I am taking from the last session also, that many people try very hard to have unfair advantage. जबरदस्ती, अगर होता भी नहीं है तब भी जबरदस्ती उसमें कुछ भरना है, जरूरी नहीं है. You can say that at this moment you don't have an unfair advantage. It's completely fine if you don't have an unfair advantage, but yes, this is what you are going to build in the future in this form. You can just justify that in the future. Unfair advantage बहुत तरह का होता है. अभी टेक्निकल यहाँ पे सारे लोग हैं ना, तो आईपी और कॉपीराइट ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है, बट उसके अलावा भी अनफेयर एडवांटेज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फ्रेंड, उसके 2000 फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, है ना, इज एन बेसिकली अ ब्लॉगर of some kind, and you are getting into basically a business which requires that kind of marketing, तो वो एक अनफेयर एडवांटेज होगा आपके पास, है ना. कभी कभी किसी टीम में से फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी शेफ स्टार्ट्स अ रेस्टोरेंट, तो अनफेयर एडवांटेज है ना, ऑलरेडी सेलिब्रिटी है वो अपने इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे डालेगा तो ऑलरेडी लोग उसके पास आएंगे, तो वो अभी अनफेयर एडवांटेज होता है. ओके, बट यू हैव टू बी, ऐसा कोई एडवांटेज तो दूसरों के पास नहीं है, तो आईपी और उससे आगे भी सोचना है, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करनी है. अगर नहीं है अभी, जैसे ब्रांड, बहुत से लोग कहते हैं ब्रांड इज एन अनफेयर एडवांटेज फॉर एप्पल, नॉट यू. ओके, वी अंडरस्टैंड दिस. यू विल बिल्ड अ ब्रांड. ओयो इज नाउ अ ब्रांड, बट व्हेन इट स्टार्टेड नोबडी न्यू ओयो, सो एट दैट टाइम उसके ब्रांड के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब है. अगर अब व्हेन ओयो स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस फॉर दैट मैटर, है ना, वो किसी नए तरह के होटल्स बनाते हैं, सो देन इट इज अ ब्रांड, उनके पास एडवांटेज है. मनी, लाइक मैम सेड, मनी इज नॉट एन एडवांटेज, मनी इज एडवांटेज फॉर मुकेश अंबानी, ओके, नॉट अस राइट नाउ. ओके, अदानी, for them in India, that's a advantage they have right now. Big pockets, Jio आया, सबको बाहर, ठीक है. That's we have to understand. So revenue model has to have a tight alignment with the other blocks of the lean canvas. In fact, every block should have an alignment. Understand that. Okay. अच्छा, key matrix में भी I was listening to a lot of people, just giving you a very brief feedback. Key matrix में भी बहुत सारी मेट्रिक को कोई ट्रैक नहीं कर सकता. 5-6 मैट्रिक्स, सिर्फ 2 या 3 मैट्रिक. कोई भी बिजनेस है, कोई भी फाउंडर है, वो अपनी कंपनी के सक्सेस को ट्रैक करेगा, उसके पास टाइम ही नहीं होता. वो 2-3 मोटी-मोटी चीजें, बड़ी-बड़ी चीजों को ट्रैक करता है बस. जब थोड़ा बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वो फिर प्रॉफिट और सेल्स को ही ट्रैक कर पाता है बस. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, इसी को ट्रैक करेगा.
बट इनिशियली फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डाउनलोड्स आप जिस तरह से बात कर रहे हो, या फिर नंबर ऑफ से पीपल हेल्प्ड, अगर आपका वो सेफ्टी टाइप का वो है कि नंबर ऑफ एक्चुअली आपने कितने एक्सीडेंट्स रोक लिए या कितनी सही रिपोर्टिंग हो गई या हो गई, वो शुरू में आपको वो सब मैट्रिक्स दिखानी होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है उसमें। टॉप 2 या 3 मैट्रिक, दैट्स इट, उससे ज्यादा कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑल राइट, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। कैन यू स्कैन दिस very quickly? Let us see. मैच करना है बस इसको जी। हम्म, maybe you can defend it, but obviously direct competition से ही होना चाहिए unfair advantage, but market size is big, so you can say that I have some advantage here, which majorly these players do not have. You can say that. Can you do this? Done? Okay, क्या है बिग बास्केट का? क्या है? कमीशन बेस्ड। ओके, एडवर्टाइजिंग बेस्ड किसका है? यूट्यूब। ओके, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन सबको पता है, ठीक है। AWS पे एज यू गो। ऑल राइट, so simple activity. So we have an idea about what actually these big companies are doing and how they are making money. All right, let us look at the sum of the business now. Come to directly to the revenue models. One of the most popular revenue models right now, especially for the digital products and services, is the subscription based. Subscription based क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में रिकरिंग, है ना, पर मंथ जरूरी नहीं है, रिकरिंग, है ना, हर इंटरवल पे आप कुछ पे करते हो और ऑटोमेटिक पे करते हो। ये पॉपुलर क्यों है? इतना पॉपुलर क्यों हो गया इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन? कंटिन्यूअस रेवेन्यू स्ट्रीम। ओके, प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये कैसे पता लगता है आपको प्रॉफिट ज्यादा? नहीं, बार बार खरीद भी सकते हैं ना। कैश फ्लो। ओके, पॉजिटिव कैश फ्लो। ही इज अ फाइनेंस पर्सन, आई थिंक कुछ है, पहले किया है। अच्छा, कैसे? ओके, हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड, you're right. In certain cases subscription may not work. अभी इंडिया में if you look at the way Indians actually do things, you know, लाना पड़ा, है ना, और नेटफ्लिक्स को भी अपना 199 में निकालना पड़ा, ठीक है, तब भी सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ, ऐसा नहीं है, बट देयर आर सम इनहेरेंट एडवांटेजेस इन। हाउएवर B2C बिजनेसेस में सब्सक्रिप्शन इंडिया में लो रहता है, बट B2B में ऐसा नहीं है। B2B businesses are
doing very well with this model. Okay, especially for example software SaaS services जो हैं, है ना, they do very well with subscription based models. And so you need to understand that if your customer psyche, what is your customer psyche, which is the किसका सबसे ज्यादा अच्छा उसमें पूछते हैं ना, ये जो स्ट्रीमिंग एप्स हैं इस वक्त, तो इंडिया में सबसे नंबर 1 कौन है? नंबर 1 हॉटस्टार. ओके, अब शायद ना रहे, because you know all the contracts have come to Jio Cinema, so we will see how many people. लेकिन अभी भी हॉटस्टार इज द नंबर 1 despite now not being able to stream lot of cricket. That was the reason why Hotstar got the maximum subscribers, because of cricket. But how many of you have unsubscribed from Hotstar? See what, subscribe ही नहीं किया था, है ना? बहुत से लोगों ने. But actually that is what the benefit of this model is, that many people when they subscribe it, unsubscribe बहुत कम लोग करते हैं, है ना? So people and the back of the, so we are basically lazy people, है ना? So lazy होता है customer बहुत वो, तो अगर उसे ठीक ठाक वैल्यू भी मिलती रहती है, so they don't usually unsubscribe. So that is why, and secondly he talked about cash flow. एक रेगुलर कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो रहता है, कंपनी के पास एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है. तो आपको पता नहीं कि कितना बिकेगा नहीं बिकेगा. सब्सक्राइबर्स में ये प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. इफ यू हैव से फॉर एग्जांपल अ सब्सक्राइबर बेस, यू नो दैट दिस मच रेवेन्यू मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू कम. अब और यू कैन आल्सो एस्टिमेट द चर्न. चर्न इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द पीरियड हाउ मेनी पीपल एक्चुअली अनसब्सक्राइब और लीव योर कंपनी एंड लीव योर प्रोडक्ट, है ना? तो यू गेट एन आइडिया दैट हर इंडस्ट्री का एक चर्न रेशियो होता है, थोड़ा सा 2%, 5% जो भी, तो इतने लोग चले जाएंगे तब भी मेरे पास इतना मोटा मोटा रेवेन्यू रहेगा. दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मैनेजिंग अ कंपनी. किसी फाइनेंस पर्सन से पूछिए, अगर रेवेन्यू में प्रेडिक्टेबिलिटी है, वी विल बी वेरी हैप्पी. वरना अनसर्टेनिटी रहती है कि कल को सेल होगा नहीं होगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई सब्सक्रिप्शन मॉडल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. However, you need to very match it with whether your customer, and the service has to be regular service or a product has to be regularly used. Then only this model will work. ऐसा नहीं सिर्फ कहने को आपने लगा लिया सब. Okay? Companies like Netflix, Spotify, Canva, all of them have this model. Then you have the freemium model. Freemium, most popular freemium model, Spotify, YouTube, LinkedIn, Jio, Google Cloud. ओके, इसमें होता क्या है फ्रीमियम में? बेसिक फीचर्स फ्री होते हैं और एक प्रीमियम वर्जन होता है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें चैलेंज क्या है. आप में से कितने लोग लिंक्डइन के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हो? 1 2 3 4. और बाकी लिंक्डइन पे अकाउंट कितने लोगों का है? सबका है ना? ये प्रॉब्लम होती है इसमें. ठीक है, अगर फ्री ज्यादा दे दिया तो कोई प्रीमियम नहीं लेता है. सो देयर इज अ कैच इन दिस मॉडल दैट यू हैव टू बैलेंस द फ्री विद प्रीमियम. ओके, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. लिंक्डइन वाज नॉट एबल टू डू इट. आज भी स्ट्रगल करता है लिंक्डइन इसी वजह से. इट्स अ वेरी बिग कंपनी, लार्जेस्ट नेटवर्क, एंड सो दे हैड टू बेसिकली फाइंड आउट अदर मीन्स ऑफ रेवेन्यू. सो ये उनका ये वाला जो फ्रीमियम मॉडल है ना, ये इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया. तो उन्होंने सेल्स नेविगेटर एंड अदर थिंग्स, फ्रॉम दैट दे अर्न मनी मेन. तो सिमिलरली अगर आप फ्री में, यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच फ्री कैन यू गिव and how much free should you give to at least entice the customers to go for the premium versions. Okay, ये YouTube पे कितने premium users हैं? YouTube is also struggling with this. Okay, very few. Okay, Spotify के साथ भी प्रॉब्लम है ये वाला. तो ये सबके साथ होता है प्रॉब्लम. Okay, so most of the time majority of the, again the SaaS companies के लिए ये बहुत पॉपुलर है. सर्विसेज के लिए they go for freemium model. Okay, marketplace. What is marketplace model?
Any example of a marketplace? B2B में अलीबाबा इन्होंने बोला, पॉलिसी बाजार, इंडिया मार्ट, B2B is B2B, India Mart, Trade India, Amazon, is it a marketplace or not? Flipkart, eBay. So where actually you are listing the buyers and sellers. Okay, so it is like similar to a shopping mall, physical shopping mall, where it's a marketplace. You create a marketplace. It's a mall where buyers and sellers are coming together. Okay, and they are transacting, and you earn money from. You may earn money from different things here. Okay, you may have a transaction based model. Most of the times, Amazon, does it have a transaction based model? Amazon Pay has a transaction based model, but Amazon also have a transaction model for the sellers. Okay, where every time the seller sells something, they have to pay a commission to Amazon. Okay, platform fee होती है, कभी listing की भी platform तो इसमें there is again you can charge for listing. If you have a very popular marketplace, you can charge this also. Now इसको एक पहले एक और business model होता था, revenue model होता था aggregator. So वो basically mix होता है. Again, I would say that see companies का हम जब example देखते हैं, so there are a lot of companies who keep on evolving their revenue models. Okay, और वहीं से actually ये categories define होती हैं. So ये categories ऐसा नहीं है कि these are solid categories, these are fluid categories. Okay, you move around here. So aggregator भी होता था ऐसा. Aggregator is slightly different from a marketplace. Can you give an example of an aggregator? अभी आपने किसी ने लिया था aggregator का example, वो marketplace से very similar है, लेकिन Razorpay is an aggregator, yes. Policy Bazaar is also an aggregator. Okay, it's catering to one particular industry. Okay, and it is bringing together lot of players in that. Different kinds of insurances and all these things are coming together. Third party players are coming together in one. So it's aggregating so that the customers do not have to go to different places. Okay, Zomato is also an aggregator. Yes, Just Dial is an aggregator. Okay, so there is again in this marketplace and aggregator there will be some overlaps. Please understand that. You know? But usually aggregators are industry specific. So Oyo was an aggregator. It was not a digital platform, but Oyo was an aggregator. उन्होंने क्या किया? होटल से उससे रिलेटेड जितनी चीजें थी वो सबको एक जगह ले आए. Okay, and they aggregated the different small hotels into one platform. That's what they did, a standardized service. So that's what an aggregator do. So this is basically marketplace and aggregator models are slightly overlapping. Then you have the advertising based business models. A lot of people have this kind of business model in there for their in-apps, like the people who are developing apps here. है ना? किस का है? Advertising. So you understand what this model is about. So let me hear from you. What is this model about? कैसे होता है? इसमें पैसा कहां से आता है? Okay. So in-app advertisements होते हैं, where you provide, say for example, कभी-कभी आपने देखा होगा ऐप खुलता है तो पहले उसमें एक जबरदस्ती ऐड आने लगता है, फिर आता है स्किप वीडियो, है ना? आता है ना ऐसा? तो वो क्या होता है? That's an अच्छा इस मॉडल के साथ what are the catches in this model? क्या सब लोग कर सकते हैं इसको? Wider audience. So in the initial phases, actually, when you say that you have an advertising based business model, advertising based revenue model, it's risky. Okay, you can only have an advertiser based business model when the people are willing to give you advertisements and there are customers. और इसमें wider base से ज़्यादा specific base होना चाहिए. आजकल advertisement जो होता है वो wider base को नहीं करना होता हमें targeted advertisement करनी होती है. What is the reason for the Google success? Google online digital उसमें
Google will talk about everything. Google will never talk about advertising because वो उनकी monopoly है. They don't want competition in that. And उसमें high precision के साथ you can target the customers, which is not possible before Google. It was not possible even in the digital space. People had not thought about that. So Google ka actually the real genius was to create a model which was it's still a monopoly to an extent. Okay, but for that high precision targeting, that when this happens, advertisers will pay for you. Okay, wider base zaruri nahi hai. Like for example, if you are developing an app for fitness and something like that, so now I'm sure that although okay, if you have even 1000 customers, 1000 subscribers, now I know that at least इसमें से बिल्कुल specific जो मेरा product है, if I am selling say gymming equipment or something or yoga mats, so I know that here are the people, my early adopters, where I can specifically target them. So I will be willing to pay you. Otherwise, if you say that, oh, I have so many college students, okay, and if my service is some generic service, so that may not be the right model for me. I will not pay your website or your app to basically display my ad. So in this model, you have to be sure that whom you are going to target, and you can only do that once you have a substantial customer base. Then only people will give you advertisements. So it's in the initial phases, it is not the best model to have. Yes, you can have in the second phase or third phase once you have this many number of subscribers and all. Okay, like we know that Google, Facebook, even traditional radio was an advertising based model. Okay, but that's and the world is moving from general advertising to targeting advertising. Abhi kya akhbar mein ad dena, it's very expensive, and you don't know who will read this, who will get to this. Okay, so you don't know about this. Yeah, वो भी होगा, नहीं होगा नहीं, इसमें तो इतनी स्पेस थी तो 3 लोग लिखे, ठीक है. You can think about more examples. Obviously, Google is YouTube, so it's a main model is revenue basically, and in fact for many years YouTube was struggling with, not because there was an internal debate in YouTube that the original founders did not wanted ads and all those things on YouTube, but ultimately they had to succumb to the finance people that we have to earn money. We cannot just rent this, have servers and upload videos and nobody is paying for that. So there has to be a model. Okay. Then we have transaction based models. A transaction based, it's a generic term here. What does transaction based model means? Fintech. Yes. अभी आपने किसी ने रेजर पे का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, है ना, रेजर पे का एग्जांपल दिया था. There's a company called BillDesk. यूज किया कभी से किसी ने BillDesk, है ना, बैंक की वेबसाइट सब यूज करते हैं हम ट्रेडिशनली. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्चुअली एग्रीगेटर्स, फर्स्ट डिजिटल एग्रीगेटर ऑफ financial technology. Very profitable. Recently they have, I think they were acquired, or they came up with their revenues, extremely profitable, and nobody heard about them for many years. They were just behind the scenes helping banks actually become digital. That's all they were doing. Okay, आप जाते हो पेमेंट गेटवे जो होता था, BillDesk and CC Avenue, they are 2 companies, so rich companies because of this transaction based model. But transaction based model की what are the actually issues with the transaction based model? ये कब होना चाहिए ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल? Why should you go for a transaction based model? Higher volume of transaction, a very well point. Higher value of transaction, and the transaction should be valuable for the person. Okay, higher volume of transaction, and in this per transaction price or cost will be very the revenue will be very less. Okay, so it should not pinch to the customers. It should be as insignificant as possible. So if you look at BillDesk does not take say 20 rupees on your transaction of 1 lakh rupees. They will never do that. They will take a very small percentage of it. It's point something. But they know
that the volume of the transactions are such that even if this happens, and it's an automated technology, the DAF has to maintain the load and the servers and all those things. So it will automatically churn. So it's a very, very nice business model to have, but to achieve it, it's really difficult. Okay. So you have to get really, so fintech companies mostly are transaction based. DMart, how? Mm-hmm. Will it be a transaction based? Every transaction they take. So in that sense, so there is there transaction everywhere. Okay, but this transaction model, when we are talking about, it's slightly different from that. Okay, it's usually come under, see, mostly the digital payments happen. Fintech companies, they usually go for that. DMart is basically a retailer. A retailer which is basically buying in bulk and selling it to the customers. So it's more of a brick and mortar retailer. Okay. It's a very famous, like this model is very famous. It was championed by Walmart, okay, in America. And from there, actually, all the big retailers you see, Costco, Tesco of the world, Carrefour, French company. In India, we had Big Bazaar at one point of time. And even all of these, DMart and Vishal Megamart are actually the Indian champions of this. Okay. At one point of time, Subhiksha also started it, but it went like broke. MoE also does the same, which is basically a group company of like Birla and all. Spencer's, which is a group company of Goenka Group, all of these. So they are basically the more in the brick and mortar, they are retailers. So they buy in bulk and they sell it to the customers at discount. So discount retailers, that's the business model. Okay. Transaction based business model usually happens when there is a high volume of transactions and it's continuously happening and you have a very small transaction fees. Okay. So think about it, whether you can have it at this stage or not. Make a judgment about it. And it's also very difficult in this to determine what will be the transaction fee. What will be the transaction fee? So you really have to be very sure that it should not pinch and it should not become obvious that okay, you are charging. You know, there's a company very recently, very famous company, Zerodha. किसका account है Zerodha पे? सब कितने लोगों का है यहाँ पे? Come on guys, you should have by now. Okay. Warren Buffett invested in stock market when he was 12 years old. Okay. And he said that I was too late. So please start doing it. At least have an account, understand the markets, financial markets, very important for your future. Okay. But do not start gambling on the stock market, please. Okay. Start studying about it. Zerodha is a company. What's famous about Zerodha? जीरो ब्रोकरेज है ना. आपकी जब अकाउंट खुलता है जीरो, किसी ने खुलवाया ना अकाउंट? कौन कौन है? खुलवाया, आपने खुलवाया और किसी ने? ओके. व्हाट हैपेंड व्हेन यू ओपन द अकाउंट? पैसे दिए थे कुछ? नहीं देते तो हैं. 50 रुपए तो देने पड़ते हैं. टेक्नोलॉजी फीस जो होती है उनकी, वो शुरू में एक लेते हैं, अकाउंट ओपनिंग फी. एंजल वन वाज फ्री. How does this Zerodha makes money then? It's zero brokerage. So have you bought? किस transaction पे charge करते हैं? वो equity buying selling पे नहीं करते, वो F&O में करते हैं खाली. Futures and options में. Okay? Because वो high volume trade होता है. वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं उस पे, इफ यू से बाइंग अ स्टॉक टुडे एंड यू आर कीपिंग इट द स्टॉक फॉर 2 months 5 months, यू आर जस्ट सीइंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड यू आर डूइंग इट, देयर इज नो चार्ज. बहुत लेस है वो, बिल्कुल नॉमिनल से भी ज्यादा वो होता है. और मेन जो उनका चार्ज होता है F&O में, वो हाई वॉल्यूम है. सो देखिए, ट्रांजैक्शन फी तभी लगती है, तभी मॉडल सक्सेसफुल होगा जब आप हाई वॉल्यूम वाले पे उसे लगाएंगे. ठीक है. एंड F&O में क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में
people trade very often, people hold positions and do that, put options, pull, ये सब करते रहते हैं उसमें ना, तो वो ज्यादा एक्साइटिंग। और अभी रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी बाय सेबी, हैव यू रेड दिस? स्टॉक मार्केट को लोग फॉलो करते हैं, क्या थी स्टडी का? So actually this is basically the myth. FNO में most of people, FNO traders, FNO पे थी वो, futures और options वाले, so the most of them has 95% have lost the money in 1 year. So it's really gambling नहीं करनी है, ठीक है? Anyway, transactional based business model, that's it. Next, membership models. What is membership model? One-time payment for a period of time, for a longer period of time, and then you can access the services of the services or the products of that company. So there are बहुत सबसे ज्यादा मतलब मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन जो है ना, आजकल वो काफी उसमें होता है, लेकिन मेंबरशिप बिजनेस मॉडल्स हैड बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे एक बहुत फेमस मेंबरशिप बिजनेस मॉडल होता है, क्या करते हैं हम लोग सब? जिम का सबसे पुराना बिजनेस मॉडल यही है, मेंबरशिप बिजनेस मॉडल। आपने मेंबरशिप ले ली एंड देन देयर इज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एक्सेस एवरीथिंग इन दैट, ओके। सो लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर लर्निंग एप्स, लर्निंग एप्स हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं यूजुअली। अब लर्निंग एप्स भी दो तरह के होते हैं, यू बाय कोर्सेज ऑन दैट, दैट्स डिफरेंट, बट देयर आर सर्टेन लर्निंग एप्स, आप उनको वन टाइम एक and you can access as many things as possible for a certain period of time, okay. That's also a business membership business model, but again this model only will work if you have a very good sales force, if you are backed by a really good sales team, sales efforts where there is regular inflow of members, tab ye business model work karega. So you need to have a regular पे पर यूज मॉडल। पे पर यूज मॉडल क्या होगा? एज पर द रिपोर्ट, जितना यूज कर रहे हैं उतना पे करें। तो इसके एग्जांपल्स, जैसे AWS इन्होंने कहा, गूगल फायरबेस, ओके, और IBM Watson, okay, all these cloud services are basically pay per use. जितना आप स्पेस यूज करोगे, जितना आप उनके they give what वो देते हैं ना, क्रेडिट्स आप यूज करते जाओगे, फिर यू कैन बाय मोर क्रेडिट्स फॉर योर यूज, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, कोवर्किंग स्पेसेस है ना, जितने घंटे आप यूज करोगे, जितने दिन आप यूज करोगे, जितने महीने आप यूज करोगे, यू जस्ट पे फॉर दोस सर्विसेज एंड देन यू पे पर यूज। इट्स अ वेरी पॉपुलर। अभी किसी ने एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, फार्मिंग इक्विपमेंट से कुछ रिलेटेड कोई मॉडल बना रहा है ना आप लोगों में से, रेंटल मॉडल था ना वो, कुछ के रेंट करेंगे हम उसको, है ना, रेंटर एग्रीकल्चर, है ना। सो ये बेसिकली पे पर यूज मॉडल्स आर आल्सो यूज्ड इन, देयर इज अ कंपनी, आई रिमेंबर देयर इज अ कंपनी, वो ट्रैक्टर्स को पे पर यूज, वो दे आर रेंटिंग आउट ट्रैक्टर्स एज इन दिस मॉडल। सो ये एक तरह का रेंटल मॉडल ही है, पे पर यूज। सो इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल टू हैव, especially in your initial phases, okay. Zoom is subscription based. Zoom car, हाँ, रेंटल कार्स, हाँ, पे पर यूज में आएगा, वो पे पर यूज में आएगा, बिकॉज इट्स यू यूज इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसमें उसकी लिमिट भी होती है, किलोमीटर्स की लिमिट भी होती है, और इस तरह की होती है, एरिया लिमिट भी होता है, और उसमें किलोमीटर लिमिट भी होती है। सो बेसिकली इफ यू एक्सटेंड बियॉन्ड दैट, इट स्टार्ट्स चार्जिंग यू मोर। सो पे पर यूज में hotels, basically, yes, you can call it, it's basically you are using the hotel services as according to your it's a pay per use for traditional things. See, apart from these are mostly the revenue models which are used in digital space, okay. But the most traditional business model or the revenue model has been the manufacturer revenue model. What is the manufacturer revenue model? You manufacture a product
and you sell it through a channel, okay, and that channel can be multi-layered channel. उसमें लेयर हो सकती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस के लेयर हो सकती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, okay. So traditionally, for example, Adidas is still a basically manufacturer, okay. So that's the one model. Then in the same space, in the physical marketplace space, then there's a franchisee model. So if you look at it, let us take the case of Adidas again. So Adidas as a company is a manufacturer model, but when you go to the stores here, Adidas branded stores, what are these? These are franchisees of Adidas, okay. So basically, there is a chain, okay, for the product. There's a supply chain. So in supply chain, where you lie will determine what kind of business model you will have. So in the case of license or this franchising, what you give a franchisee fee to the brand owner, which is the Adidas. One is that, and for every transaction or everything you sell, you also pay them some royalty, or you can call it some commission on the shoe. So there is a margin which is divided between. So that's the ट्रेडिशनल मॉडल. अब इसमें होलसेलर्स भी आते हैं, इसमें रिटेलर्स भी आते हैं, तो रिटेल मॉडल हो गया. जब हमने फिजिकल मॉडल में देखा था तो वॉलमार्ट का क्या था? रिटेलर मॉडल था. तो अब इस फिजिकल सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और रिटेलर्स हैं. तो वॉलमार्ट ने क्या किया कि ये बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये सब थे, इनकी जगह पे अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ले लिया, है ना. और वो जो बीच के मार्जिन्स थे उनको कोलैप्स करके उसमें से कुछ मार्जिन्स कस्टमर को आगे दे दिए डिस्काउंट की फॉर्म में. जो बीच में लोग पैसा कमाते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका पैसा उन्होंने कस्टमर्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा अपने पास रख लिया, है ना. सो बल्क बाइंग के लिए दैट इज देयर रेवेन्यू मॉडल. तो डिस्काउंट रिटेल मॉडल इज दिस. अब इसमें आजकल एक और मॉडल चल रहा है, वो आपने देखा होगा, आप लोग शार्क टैंक भी देखते हैं, उसमें बहुत से मॉडल्स इस तरह के आते हैं. इंस्टाग्राम पे बहुत लोग आजकल बिजनेस कर रहे हैं, मीशो पे बहुत लोग बिजनेस करते हैं आजकल, है ना. तो वो कौन से बिजनेस मॉडल कहलाते हैं? एक D2C कहलाता है, डायरेक्ट टू कस्टमर्स, ओके. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू अगेन हियर, आप मैन्युफैक्चरर या तो खुद हो या फिर आप किसी से लेते हो एंड देन यू आर डायरेक्टली सप्लाइंग इट टू द कस्टमर्स. अब बाकी सारी चेन जो थी रिटेल वाली या इवन डिजिटल जो रिटेलर्स हैं, Amazon हो गया, यो मीशो इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिकम अ डिजिटल रिटेलर नाउ, ओके. लेकिन बट आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अपनी फॉलोइंग से डायरेक्टली बेचने की कोशिश करते हो, फिर आप अपनी वेबसाइट्स पे लेके जाते हो वहां से डायरेक्ट करके ट्रैफिक को. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु डू दैट, कि इंस्टाग्राम पे करा, उसके बाद अपनी डायरेक्ट वेबसाइट पे, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स मिंत्रा पे भी अवेलेबल हैं और जगह पे भी अवेलेबल होते हैं, बट वो मार्जिन उनके कम हो जाते हैं वहां जाने से. ड्रॉपशिपिंग तो अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है. बेसिकली ड्रॉपशिपिंग एक इट्स काइंड ऑफ अ मिड D2C जो ब्रांड्स हैं, दे डू लॉट ऑफ ड्रॉपशिपिंग आल्सो, है ना. आपने काइली जेनर का नाम किसने नहीं सुना? सबने सुना है, सबने सुना होगा आप लोगों ने. तो काइली जेनर का जो ब्रांड है, बेसिकली यू नो हाउ वैल्यूएबल दैट ब्रांड इज. इट्स अ $multi-million ब्रांड, और वो खुद उसकी जो ब्रांड वैल्यू इट्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स. एंड she has only I think 12 employees managing that whole brand. And how they do it? Drop shipping model. Everything is getting manufactured in China because it's the world's factory, है ना. चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, वहां पे सब चीज मैन्युफैक्चर होती है और उसको बीच में वो ब्रांड करते हैं एंड दे डायरेक्टली शिप इट टू दैट. सो ड्रॉप शिपिंग का यही मॉडल है. बेसिकली देयर इज अ मैन्युफैक्चरर हु इज अ मास मैन्युफैक्चरर एंड यू गेट योर प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड फ्रॉम द मास मैन्युफैक्चरर्स. आप जो बहुत सारे मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी बिग ब्रांड्स, लाइक जो अब तो थोड़े बिग ब्रांड्स हो गए, लेकिन एक जमाने में इंडिया एक कंपनी थी बहुत मशहूर हो गई थी, माइक्रोमैक्स. माइक्रोमैक्स was in this space was a drop shipper, nothing else. There were some traders, they were actually, the founders were actually traders of mobile phones who were sitting actually in Delhi. They realized that there's a big market, there's a big manufacturing going on in Shenzhen in China. So they went there, they started talking to mobile phone manufacturers because China में mobile phone revolution India थोड़ा पहले आया था. So they had smartphones, उनका digital penetration हमसे बहुत ज्यादा था.
So what they did, they started branding their mobile phones और वो इंडिया में लाके they started selling it. So वो बिल्कुल complete drop shipping model था. They were only controlling the marketing part. और वो इतना बड़ा ब्रांड हो गया था इंडिया में ना. Everyone, Micromax became famous. मतलब क्रिकेट स्पॉन्सर होता था, मतलब माइक्रोमैक्स कप. Okay, so but still they're still in business. They're doing the market. वो एकदम fragment उनका different हो गया उसमें. Anyway, so that's a drop shipping business model. Freelancing, what in sense? No, for a freelancer or as a platform. So Fiverr is a platform where freelancers actually. So for Fiverr, it's a transaction model. Marketplace है, मतलब that's what I'm saying. These are not one, like you cannot have, these are fluid categories. Okay, it's a marketplace, but how they are making money is through transactions. Every transaction they are charging some, or maybe marketplace you be charging a commission. That's it. Okay. So these are actually some of the business revenue models, and you have to start thinking about the pros and cons of each revenue model and trying to fit this revenue model with your customer segment, with the channels, with the problem you are trying to solve. Random नहीं करना है. अगर random करेंगे ना, so you will face actually questions around this. Facing questions is good, but let us ask these questions to ourselves, that which revenue model will really fit our game, our startup. Okay, and at what stage. So you may start up with one revenue model, you may end up basically with more revenue streams. Usually we divide these revenue streams into two parts. One is the primary revenue stream, the other is the secondary revenue stream. So when you go for a presentation, you strictly say that this is our primary revenue stream, this is from main, but this is also our secondary revenue stream. For example, you will be selling these things, that will be your first, but you may also be merchandising, like someone was doing this for mobile phones and all. So there may, you will sell it directly through this B2B channels, but you will also have, say, other revenue streams, like for example, customizing certain things for others and all. So it is a merchandising kind of a model where you will have bulk orders. So that's a secondary revenue stream. Or for a restaurant, a primary revenue stream is basically the transaction. Someone comes and buys a dish. Okay. Secondary revenue stream is delivery. Okay. So, but again, for if it's a retail restaurant, it's in a retail place, for a mall and something, their primary revenue stream cannot be the delivery one. But if it is if it's a cloud kitchen, then the primary revenue stream is the delivery. The secondary can be party orders, bulk, like catering orders. That can be secondary revenue stream. So be very clear that which is your primary revenue stream, which is your secondary revenue stream. Okay. So you need to experiment with your models, and many big companies, even in the first go, like I said, LinkedIn is a classic example. LinkedIn did not get it right. They still did not get it right, the freemium version, though they are very famous as a freemium service, but they have not got it right properly. The conversion rate from their free members to this is very poor, and they just struggle with that. So they had to basically go for other kinds of revenue streams, like think about how they package their data into Sales Navigator and all those kind of, those are more profitable for LinkedIn. So companies keep on experimenting with different kinds of revenue models. Okay, any questions? Last but not the least, I will just take 5 more minutes before we break for tea, and that is about the pricing. So though this is not part of this session, but I will just speak that when you price your products, there are various ways in which you can start thinking about it. Okay, अभी आप लोग कैसे प्राइस करते हो? अभी आप सोच रहे हो कि हम इतने का बेचेंगे, ये कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? मैन्युफैक्चरिंग को अभी एक एक करके, हाँ इधर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसके अलावा कुछ और किसी तरह से प्राइसिंग डिसाइड करते हो आप? देखिए ये जब जो आप बता रहे हो ना मुझे, ये कॉस्ट हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग. आई एम सेइंग प्राइसिंग. आप प्राइस कैसे करते हो कस्टमर को? आपको क्या लगता है कि जो ये एडिडास इस तरह से प्राइसिंग अपनी डिसाइड करता है?
So the customer base we have. So the kind of customer base company has. Kind of customer base company have, okay. एक किसी ने बोला था कुछ competitor, competition and the value we provide. Okay, that's what the answer is here. Is it's saying there are various ways. मैं ये जो आप जो कर रहे हो ये गलत नहीं है. 99% ऑफ द SMEs जो है ना इंडिया के अंदर या कहीं भी दुनिया में वो ऐसी प्राइसिंग करते हैं सब लोग. ये हमारा नेचुरल वे ऑफ प्राइसिंग है. वो क्या है कि हम पहले अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर एक अपना मार्जिन लगाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, है ना. कॉस्ट प्लस हो गया तो ये प्राइसिंग हो गया. तो एक तो ये वाला ये मॉडल होता है. लेकिन इस मॉडल के साथ ये सबसे आसान है, इसके साथ इसके बेनिफिट्स हैं. इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल, यू कैन कैलकुलेट योर मार्जिन्स एंड वेरी इजीली एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, बट इट्स में क्या होता है, यू लीव मनी ऑन द टेबल. दैट्स व्हाट वी मीन कि पब्लिक वांट्स टू गिव यू मोर मनी विच इज कॉल्ड कस्टमर सरप्लस. वो कस्टमर के पास सरप्लस है बिकॉज actually customer, when we are saying this again and again, the customers are not buying the product or services, they are buying a bundle of values. Okay, which is basically, so what is your value proposition? So if you are solving a big problem and you have a bigger value proposition, this pricing model may actually leave the money on the table. Okay, so I am not saying that you become extractive, है ना, कस्टमर से ज्यादा पैसा निकालना है, ऐसा नहीं है. बट इस मॉडल से कोई भी ब्रांड नहीं बनता है. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल से आप कभी भी ब्रांड नहीं बनोगे. एप्पल कभी भी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल से ब्रांड नहीं बना है. बड़े ब्रांड्स जितने आप देखते हो या बड़ी कंपनी जिनको भी आप देखते हो, वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे बड़े ब्रांड्स नहीं बनते हैं. ब्रांड्स बनते हैं वैल्यू प्राइसिंग पे, है ना. जब व्हेन यू स्टार्ट, ये पूरी अपने आप में इसके कोर्सेज होते हैं कि प्राइसिंग कैसे सेट करनी है. देयर आर CEOs who struggle with the pricing, they go and attend the courses to try to understand it. Very difficult to get what customers are actually perceiving. इतना आसान नहीं है ये. But what I'm saying here is that this is also the second the model is pricing model होता है pricing value based pricing. So try to understand, try to get out of the customers that what is the value they are getting from your product and service, and think about that what will be the appropriate वैल्यू. और खासकर ये न्यू प्रोडक्ट्स के साथ, न्यू मार्केट्स में जब एंटर करते हो ना आप, तब ये और डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज कंपटीशन नहीं है वहां पे. और थर्ड जो प्राइसिंग होती है ना, वो कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग भी होती है. अब आप देखते हो कि कॉम्पिटिटर कितने पे प्राइस कर रहा है, लेकिन असली अच्छी प्राइसिंग हमेशा वो होती है कि कॉम्पिटिटर एंड वैल्यू कंबाइंड. आप तो ये क्लेम कर रहे हो ना कि आप कॉम्पिटिटर से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, है ना. हमारा एक जनरल टेंडेंसी होती है, खासकर स्टूडेंट्स में, हम हमारी उस कैटेगरी में, सब में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, हम सस्ता प्रोवाइड करेंगे, हम सस्ता प्रोवाइड करेंगे. देखिए, गेटिंग एक्चुअली सेलिंग समथिंग चीप इज नेवर अ स्ट्रेटेजी. अंडरस्टैंड दैट. इफ समवन इज कमिंग फॉर यू फॉर अ चीप प्रोडक्ट, फॉर चीप प्राइसिंग, देन दे कैन वेरी इजीली शिफ्ट टू अनदर वन हु इज ऑल्सो. सो जिसके पास डीपर पॉकेट्स होंगे वो आपसे ज्यादा चीप प्राइस पे दे देगा. आप रिलायंस से compete नहीं कर पाओगे, है ना. जियो से ज्यादा compete नहीं कर पाओगे ना आप प्राइसिंग में. तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना कि हम सस्ता प्रोवाइड कर देंगे, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी. यस, इफ से फॉर एग्जांपल जैसे लेंसकार्ट ने की, या फिर लेंसकार्ट जिसका मॉडल था, लेंसकार्ट एक्चुअली इज बेस्ड ऑन अ मॉडल. वॉरबी पार्कर एक कंपनी थी अमेरिका में, वो क्लोन है बेसिकली, बट अमेरिका में there was a monopoly in the specs and goggles market. मोनोपोली थी एक कंपनी की, एक ही कंपनी है वहां पे, उसकी मोनोपोली है, उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, रेबैन, ओकले, सब उसी के ब्रांड्स हैं. ठीक है, ओवरऑल जो बिग कंपनी है, वहां पे एक स्पेक्स बनवाने में लाइक इट वाज कॉस्टिंग टू मच. सो द फाउंडर, एक्चुअली द वॉरबी पार्कर का जो फाउंडर था, उसका चश्मा टूट गया था. एंड ही वाज एक्चुअली, इट वाज द एंड ऑफ द मंथ, सो ही हैड, उसकी जो सैलरी थी वहां से, he was a college student, he was working part time, so उसकी सैलरी नहीं आई थी. So he, with a broken glass, he spent around a week, and then he started realizing that why these specs are so expensive here, and then he went into the details and cost. तो ये जब उस तरह से आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो and that at a lower cost, then it is a good strategy. Okay, बट आप हर चीज में ये कहो जो कि ऑलरेडी सस्ती है और आप ये कहो कि हम उससे सस्ता प्रोवाइड कर देंगे, that is not a strategy.
ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, और फिर इसके अलावा भी प्राइसिंग होती है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग में ना कई कई तरह की प्राइसिंग होती है, लेकिन मार्केट स्किमिंग कहते हैं, मार्केट स्किमिंग होती है, या फिर लोअरिंग द प्राइसिंग, जैसे आपने कहा कॉम्पिटिटर को किल करने के लिए, जैसे जियो करता है ना, कंपटीशन को किल करने के लिए एकदम लो एंड प्राइसिंग वो कर दी, उससे मार्केट स्किमिंग जैसे एप्पल करता है कि अपना एक प्रोडक्ट जो है ना 16 को लॉन्च करेगा वो 1 लाख पे, है ना, और वो क्या करेगा, धीरे धीरे प्राइस कम करेगा बाकी वाले प्रोडक्ट्स के, 15 14 के प्राइस नीचे जाएंगे, तो अब उसकी भी सेल होती है, और जो लोग ज्यादा नहीं उसकी भी सेल होती है, तो मार्केट को स्किम करता है, पहले वो ऊपर की मलाई जैसे कहते हैं ना स्किम, उसको लेता है पहले वो, और फिर वो नीचे करता है धीरे धीरे अपने प्राइसिंग प्रोडक्ट, बट वो एप्पल है, ओके, हम नहीं है, हमें भी एप्पल नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी प्राइसिंग यूज करनी है, तो मार्केट स्किमिंग भी होती है, ये भी होता है, फिर बंडल प्राइसिंग होती है, वेयर यू आर एक्चुअली, इफ यू आर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विच आर यू आर एज एन additional or a supplement, complementary or supplementary product to someone else. For example, Logitech था, Logitech as a company कंप्यूटर पेरिफेरल्स है ना, तो उसने क्या किया, उसने जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स है या वो है उनके साथ अपनी प्राइसिंग को बंडल किया, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करी कि मेरा माउस रख लो, है ना, फॉर अ नॉमिनल कॉस्ट। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, बंडल प्राइसिंग मिलती है कस्टमर को कि 2-3 चीजें मिलके मिल रही हैं, दैट्स ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी कहते हैं, वो होता नहीं है, आपने देखा होगा आजकल बिहेवियरल साइंस में बहुत चल रहा है, 9.99 है ना, $99 का, है ना, वन उसको 10 नहीं करेंगे, 9.99 कर देंगे, साइकोलॉजिकल। सो वी हैव 9 एज द नंबर इन अवर ब्रेन, नॉट 10। सो दैट्स व्हाट वी डू। सो प्राइसिंग अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च ऑन प्राइसिंग व्हिच कीप्स ऑन गोइंग। Okay, it's a very good question, but it has a different answer, and our answer goes beyond the class. But I'll still take it if everyone is interested, because it's one of my favorite examples of nano. Actually, if you look at nano, see product fails or something fails because of n number of reasons. So there is, like, you cannot narrow it down to pricing or something like that. Okay, there can be n number of reasons why product fails. For example, लेट मी जस्ट, नैनो का एग्जांपल आपने दिया, मैं आप एक और गाड़ी का एग्जांपल देता हूं। यू नो कंपनी कॉल्ड फिएट, है ना, इंडिया में फिएट का क्या हाल हुआ? यू नो फिएट इज द ओनर ऑफ विच ब्रांड? फेरारी। फेरारी जो ब्रांड है वो फिएट ग्रुप का है, ठीक है, बट इंडिया में बिकॉज ऑफ व्हाट, आपको क्या लगता है? क्योंकि फिएट की गाड़ी के कम परफॉर्मेंस होती है, फिएट के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिएट की इकोनॉमिकल नहीं थी गाड़ियां, पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, सर्विस कॉस्ट वाज टू हाई। ओके, सो दीज प्रॉब्लम, लाइक फॉर एग्जांपल पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, सर्विस कॉस्ट, फिएट एक्चुअली पार्टनर्ड विद टाटा, ओके, फॉर सर्विसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क हो गया था सर्विसिंग का, उनका पार्ट्स भी अवेलेबल थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन ये परसेप्शन होता है, अगर कस्टमर्स के दिमाग में एक बार परसेप्शन बन गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट परसेप्शन। सो इंडिया में फिएट का जो प्राइमरी मॉडल था वो था पद्मिनी। यू नो पद्मिनी, यू रिमेंबर द पद्मिनी, वो कुछ पुरानी फिल्म देखो 80s 80s की, तो उसमें हीरो कभी कभी ड्राइव करता है पद्मिनी, एम्बेसडर का छोटा वर्जन था वो, काफी एम्बेसडर वॉज तो भी वो एक मतलब पॉलिटिकल गाड़ी है तो उसमें, बट पद्मिनी हैड अ वेरी बेसिकली very very feminine look first of all, and it was not a aspirational car, and then came the other brands in the competition, okay, at that time. So people, when surveys after surveys, Ford, this Fiat tried to actually change that perception. उन्होंने लीनिया लॉन्च करी, उसमें मतलब even Sachin Tendulkar at one point of time was the brand ambassador of Fiat. Okay, they tried everything, but in every survey people, जब Fiat का नाम आता था, people always used to, because वो इतना solid brand था उस वक्त पद्मिनी, और उस वक्त इंडिया में गाड़ियां थी नहीं, एम्बेसडर was one, और हिंदुस्तान मोटर्स की एक कंटेसा आती थी, ठीक है, पद्मिनी थी, और
जीप तो खैर वो पुलिस की होती थी, तो मतलब इतना पब्लिक के पास कम होती थी जीप। और फिर उसके बाद फिर मारुति आई, मारुति की वो पीछे पुराना मॉडल जो आया था मारुति का, वो बाद में आया, ठीक है। तो ये उस इरा की बात है। तो उस इरा से फिएट एक्चुअली, इफ फिएट वुड हैव लॉन्च्ड अनदर ब्रांड इन इंडिया, they might have been successful, okay, but they still persisted with Fiat as a brand. So जो ब्रांड की इमेज में, यही साथ टाटा के साथ हुआ था, टाटा नैनो के साथ, बिकॉज कार इज अ वेरी एस्पिरेशनल थिंग फॉर अस। अब देखिए यही चीज आप टेस्ला में रख के देखिए, है ना, जो कल एग्जाम्पल दे रहे थे वो नदीम साहब ने जो एग्जाम्पल दिया था, रीवा वॉज देयर इन इंडिया। रीवा कितने लोगों ने देखी है? रीवा एक गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया की, है ना, 10 साल से है रीवा यहाँ पे, 10 साल से। महिंद्रा ने खरीद लिया है रीवा को, है ना, रीवा की टेक्नोलॉजी महिंद्रा ने खरीदा, दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बहुत पुराना ब्रांड है रीवा, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दे आर बेसिकली लाइक, उन्होंने बहुत पाइनियर्स हैं इंडिया में वो, और इलेक्ट्रिक में बहुत सारी वे हैं। बट इलॉन मस्क व्हाट दे डिड, उन्होंने कहा कार इज अ वेरी एस्पिरेशनल थिंग, है ना। रतन टाटा हैड अ विजन फॉर नैनो, बट पीपल डिड नॉट बाय दैट विजन। उन्होंने कहा कि जो हम स्कूटर पे जो लोग चलते हैं, उनका विजन ये था कि जो स्कूटर पे चलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, आप कभी देखिए वीडियो भी है उनकी उस पे अपने इंटरव्यू में, उससे हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू, जो ये स्कूटर पे चलने वाले लोग हैं, फैमिली चलती है, हम इनके लिए एक गाड़ी बना रहे हैं। तो उसको ब्रांड कर दिया गया लख टकिया, 1 लाख की गाड़ी। उन्होंने कभी नहीं कहा था ये चीज, उन्होंने कभी नहीं कहा था, कि उन्होंने कहा था हाँ ठीक है लगभग 1 लाख हो सकता है। जब उन्होंने जर्नलिस्ट पुश्ड हिम, और वो हर अखबार में हर जगह पे लख टकिया, 1 लाख की गाड़ी। पीपल डू नॉट वांट लख टकिया, है ना, पीपल वांट के मतलब उन्हें गाड़ी जब वो लेता है कोई आदमी, तो वो एक एस्पिरेशन से लेता है, उसमें वो देखता है कि वो मतलब इट इज एक्चुअली द सोशल नीड। कार डू नॉट ओनली, वो फंक्शनल नीड पे फोकस था सारा, जॉब्स टू बी डन में, है ना, और इमोशनल नीड भी कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, कोई एक्सेलरेशन, कुछ ऐसा ही परसेप्शन नहीं था कि बहुत वो हो रहा है। ये प्रॉब्लम हो गई उसके साथ, है ना। सो एक्चुअली छोटी गाड़ियां बहुत सक्सेसफुल हैं दुनिया में, मिनी कूपर को आप एग्जाम्पल है उसका, मिनी कूपर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो ऐसा नहीं है, बट इफ यू क्रिएट कार के साथ, इलॉन मस्क ने इसको उल्टा करा। पता है आपको, पहले अभी मैं एमवीपी पे आऊंगा इसके में, तो आई विल जस्ट रिमाइंड मी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टेस्ला आल्सो, है ना, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है। सो यू आई गॉट आंसर्ड यू, एनी अदर क्वेश्चंस? All right, so we will break for two. I think there's lot to be digested in this, lot to be think about. So just reflect on what kind of revenue model you will have. Okay, and we will meet for the MVP session after this. Thank you. Thank you, sir, for that valuable information. Ladies and gentlemen, we will take a short break for tea. So kindly step outside and enjoy some refreshments. Thank you.
Volunteers, get the participants back, please. Everyone, please settle down. We are about to begin. Settle down at the back, please. So shall we start or wait for some? The students are very less here, but I don't know. How can we wait They more are in than... the basement. Okay. So we'll wait for 5 minutes. Volunteers, please bring 2-3 back the minutes participants to back. start. Bring back the participants.
Everyone settle down, please. People standing in the center, settle down. Let's start now. Welcome back, everyone. Hope you all feel refreshed after that tea break. Moving on to the next topic, prototype to MVP, transforming validation into actionable insights. Dr. Ahmed Faraz Khan, sir, will continue with this session. So kindly welcome him, sir, with a round of applause. Thank you. I'm still seeing that there are some empty seats, so a lot of people are still having their tea, but we will have to start this session because we have very less time, and this session requires a bit of, I am sure that you will have a lot of questions during this session. And this MVP, and we have been talking about a lot of entrepreneurs who were there here yesterday in the panel discussion. बहुत लोग MVP की prototype की बात भी कर रहे थे. कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा था, कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बात कह रहे हैं. तो हम लोगों का लेवल भी अलग अलग है इसकी अंडरस्टैंडिंग में. बहुत से लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, सो दे हैव सम आइडियाज अबाउट प्रोटोटाइपिंग, एंड यूजुअली हमारा जो माइंडसेट होता है इंजीनियर्स का वो खासकर ये होता है कि वी स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोटोटाइप अर्ली, है ना. तो एंड वी ऑल्सो रियलाइज्ड वन थिंग सिंस लास्ट 2 days के बिल्डिंग प्रोटोटाइप टू अर्ली में ऑल्सो मे नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी, है ना. अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता है, हमें कस्टमर नहीं पता, तो प्रोटोटाइप हम किसके लिए बना रहे हैं, हम क्या करें. तो हमें, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग में हमेशा हमारा बायस टूवर्ड्स मॉडल्स होता है ना, मॉडल बना के दिखाना होता है सर को, वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, उस पर सब होता है, तो वो हमारा बायस हो जाता है. सो मॉडल तभी अच्छा बनेगा या प्रोटोटाइप तभी अच्छा बनेगा व्हेन यू हैव अ कस्टमर इन माइंड, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम रियली वेल डिफाइंड, and you think that there are all possible solutions, then you develop a prototype or an MVP around that. So in this session we will talk about, first of all, what is this, ये जो terms हैं MVP हैं या फिर prototype है, what is basically, what are these terms? Okay, so we'll understand what are the features and benefits of prototypes and MVPs. Why do we, so why there's so much insistence on developing prototype and MVPs? Okay, and what's the benefit of it? That's what we need to understand, and also explore where there are various types of prototypes or MVPs available. What are some of the best practices which we can keep in mind while developing our prototype or MVP, as well as understand the difference between low fidelity and high fidelity prototypes, and also the ultimate use of these prototypes or MVPs. What do we do with this, and how this can help in our overall journey, whether it is a pitching, whether it is basically developing a product or service, or how it overall helps in this process. So we'll try to cover these aspects in this. Okay, so let me just ask this question to you. Okay, so you heard this term, what is MVP, what is prototype, what is common between these? One feature that will generate the income. Okay, very interesting. Anyone else? Presents the core function. So prototype क्या होता है? Let us ask what prototype is. Prototype क्या होता है? Dummy model. Working model for testing. Blueprint of the product. And what is an MVP? It's a complete product with some minimal features which we will ship to the customers and all. Okay, very well. Yes, you are right in both these cases. Prototype is an early stage thing compared to an MVP, first of all. Okay, prototype, usually nowadays we test prototypes. It is, do we test it with customers, prototypes? No.
Okay. Why no? First impression. So you don't want to give a bad impression, eh? So prototype बुरा सा होगा. No, we do that with select group of customers. For example, this is a clay model of a car. So it's a model. So will it be a prototype or a MVP? It's a prototype. Okay. And this this house, it's a model of a house. It's to the scale. You have seen that there is something outside of this hall. Okay. There is a model of the campus and it has been built to scale also. Okay. So, but it's still a prototype. So maybe prototype is not a product. Okay. Prototype is a version which is used to develop a product in the end. Okay. So it's an early stage thing. Now, when you have digital products and services, a lot of you have ideas related to mobile apps, websites and all. Websites तो कोई बनाना नहीं चाहता, mobile apps. Okay. So we have these are basically mock-ups or wireframes. Okay. App wireframe we call it. So basically, how will it will look like? But it's a very crude form of it. We will develop it ourselves tomorrow also. Or for that matter, you have a lot of technical products in mind right now, technical solutions in mind. Okay. So the assembly and how you are going to do. Someone's talking about the patenting of things. They want to patent something. Someone showed me a model which was an AI based model and they are working on the proprietary things and all. However, how are you going to assemble all of that together? That's basically the prototype. So you are not, it's not a final product, it's behind what is the product. Okay. So all of them, if you look at this, these are all prototypes. Okay. These are not products, they cannot be sold to any customer. Nobody is going to pay anything for it. But for what we are using it then? If you are not able to sell it, हम क्यों कर रहे हैं? तो फिर हम सीधे MVP ना बनाएं? Why should we make a prototype then? No, that is the part of the proof of concept. See, if you are going to validate your idea, you are in the last stage now. So that is about proof of concept. Sir is asking some different question. Why have you developed this physical prototype, a tangible sort of thing, and the software prototype? See, both types of prototype are existing, the hardware based and software based. So if I am not wrong, Dr. Faiz, see, if it is a software prototype, it is very commonly known as the beta version when you are going to pitch to the angel investors. So I think it is used to validate your, product. It is a very early form of your product, not exactly the product, early version. So you are going to validate, you are going to give it to your friends, relatives, a particular group of people from whom you want to take feedback. Then you are going to have that feedback from those people and going to have number of iterations until you get it the perfect product. And then you are going to develop the primary version with those features, which is known as minimum viable product, which would be used for the actual commercialization. Very rightly said, pointed out by sir. The main purpose of developing a prototype is feedback, like what sir said. And prototype is not given, it is given to customers, it may be given to experts, it may be given to other people, it may be given to your friends and all to give you some kind of feedback, which is a very initial feedback. But the purpose of this feedback is actually to get the problem solution fit. Okay? Problem है, आपने problem conceive करी थी, अब आप उस solution का you are developing a physical manifestation of that solution. ना जो आपके दिमाग में solution था, जो अभी lean canvas में आपने लिखा, अभी तो वो आपके दिमाग में है ना. So for example, if I ask you that's आप लोगों से पूछा जाए कि you are developing someone was developing some cover
AI based cover for वाटर टैंक्स, है ना? तो अगर मैं उनसे पूछूं तो मेरे दिमाग में कुछ एक इमेज आ रही है उसकी, है ना? मैं उनसे पूछूं तो उनके दिमाग में कुछ और इमेज है ना? उनकी टीम में किसी और से पूछूं तो उनके दिमाग में कोई और इमेज है ना? क्या कलर है? मेरे दिमाग में तो ग्रे कलर का आ रहा है, आपके दिमाग में किस कलर का आ रहा है? ब्लू आ रहा है इनके दिमाग में। वो जो टीम का है आप, है ना? हाँ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सिल्वर आ रहा है ना? सो अब देखिए, मैं एज अ कस्टमर आई एम इमेजिनिंग समथिंग एल्स। आप कोई कार का मॉडल बनाते हो, मैं आपसे कहूं जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन अ कार। एवरीवन ऑफ यू विल इमेजिन अ डिफरेंट कार, है ना? कोई क्रेटा, कोई टेस्ला, कोई कुछ, है ना? अलग अलग गाड़ी के कलर भी होंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम, ओके? एंड वी हैव टू टैकल दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्चुअली मेक अवर टीम कम ऑन द सेम पेज, है ना? एक विजन, एक वो। तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, whether it is a product or a service. Service का भी physical manifestation होगा, we will come to that, okay? So now you have conceived a solution and now you see that, okay, this solution will look like this, okay? And you are checking whether the problem you have conceived, it is solving this problem or not. So problem solution fit. For that we go for prototypes. Clear हो रहा है? Okay. Prototyping is the process of designing a mock-up of a product or a process ahead of creating the final design. It includes various iterations. Prototype में भी काफी iterations होते हैं. Not every prototype is a perfect prototype. Allowing designers, product owners, and other stakeholders to visualize how product will look and feel, as well as how users will interact with it. Okay, so it gives kind of a model for all of this. There are obviously why should we do it? Like we said, there are some benefits. It helps in easy detection of missing functionality. So maybe you were thinking that there is a problem, you developed something, the solution is not fitting. Now you know because of what feature or what functionality the solution is not fitting the problem. Okay, so you get to know this first of all. It gets clarity about how will it in the future look and feel like. Okay, अभी ऐसा है, the prototype is not working, maybe in the last stages or final product will look like something like this. Okay, जैसे गाड़ी का मॉडल बनाया तो पता लगा कि in the end the car का जो शेप होगा वो कम से इस थोड़ा सा इस तरह का होगा, चेंज होगा, लेकिन इस स्टाइल की होगी गाड़ी ना, सेडान होगी या फिर एसयूवी होगी, क्या होगा? ठीक है। एंड अलाइनिंग द टीम, अभी तक तो टीम भी अलाइन नहीं होती है ना? till the time the physical manifestation of product service is not there, because founder may have a vision, you may have 5 team members are all visualizing different things. So to align the team, it is also important to have a prototype, है ना? अब सबका एक विजन है, एक ये है, इसीलिए किसी कंपनी में मिशन विजन लिखा जाता है, सबको अलाइन करने के लिए लिखा जाता है कि विजन स्टेटमेंट ये है, मिशन स्टेटमेंट ये है, ठीक है? Better understanding of customer needs, and now you can obviously show it to the customers or prospective customers, not for the purpose of selling. Obviously you cannot sell a prototype, you can always take feedback. जैसे आप for example you have developed say आपने sliders बनाए, उसके लिए जो example आपने अभी लिया था आप ही के startups में से है, for mobile phone handsets and the back end and all. Okay, so आपने डिजाइन बनाया, तो आप उसमें यू शो इट टू द डिफरेंट कस्टमर्स कि हम कुछ इस तरह का बना रहे हैं और ये करेंगे, तो कस्टमर से क्या ये ऊपर से लग जाएगा इसमें, क्या ये नीचे से लग जाएगा, इस तरह से तो ये बहुत कंबरसम हो रहा है, इसमें ज्यादा कन्वीनियंट होगा अगर हम इसे ऐसे लगा सकें, है ना, ऊपर से हम इसे स्लाइड कर सकें. सो इट विल गिव यू आइडियाज अबाउट व्हाट एक्चुअली कस्टमर वांट्स. ओके, सो अगेन the problem was there, the solution now what customer wants is fitting or not. So it will give you an idea, okay, and it is reducing your rework. So because अगर हर चीज पेपर पे रहेगी, सिर्फ बिजनेस प्लान उसमें लीन कैनवस में रहेगी, तो बहुत दोबारा आपको वर्क करना पड़ेगा. So you will have to basically move ahead out of that, है ना. जब प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइज होने लगेगा, you have to physical manifestation, you can develop around it, and then you can start showing and getting some real feedback. However, there are also some issues with this. It takes time. It takes time to build a prototype. So it is अभी तक तो क्या था ना, लीन कैनवस भी 2 दिन में बन गया कैसे ना कैसे, ठीक है, एक वर्जन तो बन ही गया उसका, है ना. प्रॉब्लम सोल्यूशन
खैर इंटरव्यूज में भी टाइम लगता है, पीपल थिंक दैट इंटरव्यूज में टाइम नहीं लगता, कस्टमर इंटरव्यूज। अच्छा, और उसमें सबसे ज्यादा हिचकिचाहट होती है लोगों को करने में। लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, ऑल ऑफ यू, वी विल एंड, मोस्ट ऑफ यू, व्हाट यू डू, यू आस्क योर फ्रेंड्स, है ना, जो सबसे आसान तरीका है वो फ्रेंड के। रियल कस्टमर से, जो कस्टमर पर्सोना बनाया था ना, उनके पास नहीं जाते, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है ना? किसान के लिए चीज बना रहे हो, पहले किसान से बात करो जाके, है ना? सो उसमें टाइम स्पेंड करना है, और तब जो किसान कह रहा है उसको आके प्रोटोटाइप करो। जो मम्मी कह रही है उसको आके प्रोटोटाइप मत करो, मम्मी से फीडबैक मत लो, है ना? सो व्हाट हैपेंस, मॉम टेस्ट कहते हैं इसको, मॉम टेस्ट। यू कम टू योर मॉम और आप कहते हैं मैंने मम्मा आज ये एक चीज डेवलप करी है, सो दे विल, व्हाट योर मॉम विल से, वाओ माय चाइल्ड, कितना अच्छा काम किया तुमने बेटा, है ना? अब खाने में क्या खाओगे ये बताओ, नेक्स्ट। बिकॉज उनका जो दिमाग है वो उस पे है। आई एम नॉट सेइंग शी इज नॉट गिविंग अ फीडबैक, बिकॉज शी लव्स यू, शी गिव्स अ फीडबैक, शी विल ऑलवेज लुक एट थिंग्स यू डू इन अ पॉजिटिव वे, है ना? थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा कभी कभी, जब मूड खराब होगा, ठीक है, तो वो तो एक अलग है। Dr. Faraz, I have to share something with the students community, as we have been talking about the prototype development. So prototype development is very, very important, and I would like to correlate it with the problem solution fit. So you have to see whether the problem which has been identified by you, whether you have designed an appropriate solution in order to address that problem, number one, and the product market fit. See, the prototyping is very, very important part in order to validate your solution which you have designed and developed. Couple of years back, in India, 90% of startups, fail. And I do remember some IIT founders started one young startup decade back on 3D televisions, three-dimensional televisions, and that startup came into India for the first time. But the founders missed, they did not validate, they did not develop their prototype, and their, prototype, which was the early product, was not accepted in the market. And, even though the IIT founders were there in that startup, that 3D television was not accepted in the market, and that startup failed. So it is very, very important to see the problem solution fit and the product market fit through your prototyping. And even you can, if you are not satisfied with your prototyping, there is another concept of prototyping. So you can also go the previous stage of prototyping that I think Dr. Faraz will be discussing with us. Thank you very much. Thank you, sir. Maybe I will not have time to discuss prototyping, but sir, you can catch sir in the lunch time and you can ask from him about prototyping. Thank you for adding value to this, sir. Like what sir said, prototyping is so essential. Like sir was giving an example of 3D. If you all remember, there was a product launched by Google, very famous product. It garnered a lot of press at one point of time, Google Glass. Anyone of you used it? प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन क्या करा उन्होंने, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, जो नहीं करना होता है ना, इट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, है ना. दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी. गूगल के पास पैसे की कमी नहीं थी, दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी एंड दे सॉट दैट दिस इज द वे टू गो एट दैट टाइम, है ना. गूगल ऑल्सो लर्न देयर लेसन फ्रॉम दैट. सो दैट प्रोडक्ट टैंक कंप्लीटली बिकॉज they had not conceived a problem. So it was a product searching for a problem. It was a solution searching for a problem. Okay. And there was another company which was watching all of this, a very smart gentleman, Steve Ballmer, the CEO at that time was of Microsoft, classmate of Bill Gates, who is actually the brain behind all the organizing of Microsoft. He was watching all of that. He was watching the development of their technology, and they had this always, Microsoft has been, they are called the thieves also. They took from one technology, Apple se leke idhar hi kara, but they are intelligent people. So they did what Google at the time could not do. They used that technology, they went around
and started first understanding the problem, that where this actually technology can really solve the problem. And so they went into construction industry, they went into oil and gas, and they're heavy industries where there is a requirement of such kind of a device which can say, if I'm having a glass, I can scan this wall and see what kind of pipeline is going, what kind of concrete is there, what kind of electrical lines are going here. Okay, so as a construction engineer, I need this kind of technology. I want to reduce the efforts and all. I'm going into, say, oil and gas and in the oil wells and all. So I need how everything is working. Is this working? So all this virtual reality, augmented reality kind of things was integrated into that. So they actually used all of that. They identified a problem in these big industries. They created a solution. Its solution is called HoloLens. HoloLens. Just check Google this out. There was Google Glass, there was HoloLens, same technology, but it is a very, very successful product. And they chose the industries which were willing to pay them like big bucks. Okay, so it's important that you find the problem solution fit, and that's for that this prototyping is very, very important. Okay, so there are various different types of prototypes. Okay, the first type is paper prototype. So you develop an idea. You have some solutions ideas. Okay, I have solution 1, solution 2, solution 3. After brainstorming, you have narrowed down on 5 solutions. So the first and the easy way in which you can develop is the paper prototype. And tomorrow we are going to have an exercise on paper prototype. But so physical prototyping, cutouts, है ना, बचपन में किया है सब लोगों ने बहुत, है ना, पेपर प्रोटोटाइप बनाए थे ना बोर्ड का सबने, है ना, बोर्ड का पानी में फिर चलाते थे सब लोग, तो है ना, ओरिगेमी बनाते हैं वो जापानीज, उसमें बड़ा फेमस है ओरिगेमी आर्ट. So that's basically paper cutouts and so you can use that also, and you can sketch also on a paper. Okay. Then you have wireframes. Today these are very easy things to do. So all of you, most of you are engineers doing engineering and all. You know that there are a lot of websites available. अगर मैं आज आपसे कहूँ आपको एक website बना, you can, आप तो पूरी website ही बना दोगे, है ना? तो wireframe तो, but wireframes are still very much in use because they can show that how the flow of and how the features will be arranged, how the flow will take place and everything. Okay, so very important. So wireframes are still used. Good websites are still made. First wireframes are made and then websites are made. Okay. Then you have device mockups. Device mockups. आज 3D printing का जमाना है. आपके सबके कॉलेज में 3D printer होगा आजकल. ओके ना? आपकी लैब्स में सब में ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, सब जगह पे होता है आजकल 3D printer. है ना? And the technology has come down. The cost of this technology has come down. बहुत बड़े-बड़े 3D printer होते हैं. चाइना में घर बना रहे हैं 3D printer से वो. ठीक है? घर बना के वो लगा देते हैं. तो इतना वो हो गया है. So an early physical version, if you have a product or if you are developing a new product, है ना, which is a physical product and इस तरह का आप बना रहे हो, कोई equipment बना रहे हो आप, medical equipment है, कोई farming equipment है, कुछ इस तरह का बनाते हैं, so then this kind of technology is used, device mockups. But उससे भी प्रोटोटाइपिंग में ये सिमुलेशंस यूज होते हैं, डेटा अराउंड वेदर इट व्हाट इज द एरर रेट,
कुछ, तो ये सब चीजें हैं, दे आर इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स आप बना सकते हो, दीज आर रियली इजी टू मेक नाउ डेज, है ना। आपको 1 घंटे ट्यूटोरियल देखना है और आपको साथ में उसके बनाना है बस। फिग्मा तो इतना आसान है, ठीक है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है सब चीजें, ठीक है। वेब एप्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, आप इनका बना सकते हो, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स। Then you have product prototypes. Product prototypes, like I said, if you have good design. So, for example, you are developing a, अब आप कोई नया इक्विपमेंट बना रहे हो या कोई आप नया व्हीकल बना रहे हो, इन दैट, तो आप पहले पेपर में बनाते हो, फिर उसका लेकिन आप डिजिटल ड्राइंग टूल्स पे भी यूज कर सकते हो। जैसे आप लोग, बहुत से लोग तो आजकल यूज ही कर रहे होंगे, ऑटो कैड यूज करते थे हम लोग, है ना, इंजीनियरिंग में ऑटो कैड यूज होता है, और इस तरह के बहुत अब इजी ड्रैग एंड ड्रॉप वाले भी आ गए, ऑटोडेस्क फ्यूजन है, टिंकर कार्ड है, ये सब इस तरह के टूल्स हैं। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली मॉडल्स, एंड देन यू कैन आल्सो गो फॉर 3D प्रिंटेड मॉडल्स। तो इन द प्रोडक्ट स्पेस यू कैन डू दैट। सर्विस में, लाइक आई सेड, सर्विस ब्लूप्रिंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कस्टमर जर्नी मैप। कस्टमर जर्नी मैप ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द जर्नी ऑफ द कस्टमर विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप एक नई सर्विस, आपने से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि अपनी सर्विस के लिए बहुत मशहूर है, एंड दे आर वेरी एक्सटेंसिव यूजर्स ऑफ दिस कस्टमर जर्नी मैप। आप लोगों ने नाम सुना आइकिया का? आइकिया का नाम सुना, तो उनकी कुछ यूनिकनेस है आइकिया की। क्या है यूनिकनेस? ओके, एनीवन एल्स जिसने, आप बताएं। ओके, वेरी गुड, गुड, DIY होता है, ठीक है। किसी ने आइकिया के ऑफलाइन स्टोर्स, ऑफलाइन स्टोर्स देखे हैं, या फिर उनकी वीडियो वगैरह कुछ देखी है? आइकिया का एक्चुअली जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो उनका कस्टमर सर्विस है, वैसे कस्टमर एक्सपीरियंस है, सॉरी। सो ये जो सारे आप फीचर्स कह रहे हो, ये सब है उसमें, DIY है, ये सब चीजें हैं उसमें। बट व्हेन यू गो इनटू एन आइकिया स्टोर, यू बेसिकली एंटर अ होम, फॉर एग्जांपल। तो you enter a home, so it will be living room. So all the things are arranged like a living room. Okay, so you really experience कि ये, अगर ये बेड मुझे खरीदना है तो मेरे घर में कैसे लगेगा. So the bed is arranged like this, and everything is displayed, and everything is for sale. And they give you a pad, and there is a code written. Okay, so if you want to buy, say for example, okay, this is the lamp. Lamp बहुत अच्छा है. You will write the code, and you will keep on writing, and you will keep on going from one place to another. So living room से you get into kitchen, and kitchen में सारे appliances लगे हुए हैं, kitchen में सारी चीज लगी हुई है, and then you keep on, okay, मुझे ये खरीदना है, नहीं खरीदना. फिर you get into study room, you get into say bedroom, you get into the washrooms, and you get everything there displayed, like, and everything is planned. And what they plan is they use a technique called customer journey map. So they map the journey of the customer with the every nook and corner of their store. वो स्टोर की हर स्पेस को ऐसे इमेजिन करते हैं कि जैसे कस्टमर जब आएगा तो व्हाट द कस्टमर विल डू फर्स्ट, उसके बाद कस्टमर का, तो एवरी इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ द कस्टमर विद योर प्रोडक्ट और सर्विस इज मैप्ड. That is what called customer journey maps, and it is very extensively used in design thinking. Okay, especially in the early stages of design thinking it is used. So इसमें दो तरह से बनाते हैं. एक तो एक्चुअल बनाया जाता है कि आपकी एक कोई सर्विस, कोई चीज है, जैसे पुअरली डिजाइंड कोई एक्सपीरियंस है, तो कस्टमर कहां पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कहां पे वो हो रहा है, तो पूरा जर्नी बनाई जाती है और उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज निकाली जाती है कि कहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कोई चीज नई अच्छा करने की, कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने की. और फिर आप बनाते हो एक आइडियल जर्नी मैप जो आप दिखा रहे हो. तो आप जब आप
एम्प्लॉय किसी पिच करने भी जाते हो, सो यू कैन शो दीज टू काइंड्स ऑफ कस्टमर जर्नी मैप्स कि अभी क्या है कि people experience these problems when they experience a service, and with our startup they will have this kind of an experience, which is this kind of journey. So we will smoothen out these problems in the journey. जहां जहां पे उनको frustration होता है, problem होती है, तो हम उसको वो करेंगे. तो customer journey maps are very very critical in especially for service kind of prototypes. Okay, and then role plays. Let us do an exercise, a very simple exercise here. Hai? Okay, first of all, try to understand that there are some do's and don'ts of prototyping. So what are the do's here? First of all, avoid unnecessary features. Okay, a lot of you have a lot of creative ideas, a lot of brilliant ideas around, and you want to have a lot of things. One stop solution वाला जो मैंने बहुत लोगों का सुना भी idea है ना, हर आदमी कह रहा है कि one stop solution होगा हर चीज के लिए. No. First, focus on some main pain points and try to solve those main points. Have those things in mind, have those things on paper, but step by step. Okay. If you try to create a prototype which is very loaded in features, है ना, बहुत ज़्यादा features होंगे उसमें, you will have to spend a lot of money and you will have to spend a lot of time, and it will delay the whole process. और कभी-कभी क्या होता है ना, आप you will lose the big picture. The big picture is the customer. आप फीचर में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप पिक्चर कस्टमर की भूल जाओगे. सो डू नॉट हैव अननेसेसरी फीचर्स इन इट, जस्ट कीप इट क्विक एंड विद मिनिमल फीचर्स. अलाइन द टीम फॉर फ्यूचर फाइनल सॉल्यूशन. सो यूज इट एज अ डिस्कशन पॉइंट बिटवीन योर टीम मेंबर्स, दैट व्हाट इज देयर, एक्चुअली आस्क देम टू कम टू अ सिंगल पेज. एक विजन पे बुलाओ सबको. दिस इज द यूज ऑफ द prototype. Okay, treat your prototype as a living document and not a finished product. अगर prototype बन गया तो इसका मतलब ये नहीं change नहीं होगा. It's a living document. So whenever the input is coming from a team member, an expert, or customers, use that to actually refine the prototype. है ना? Is a living document है वो आपका एक तरह से. And ensure your prototype communicate the vision and potential of your product. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are visualizing something else और prototype में कुछ दिख ही नहीं रहा है. सो आपका जो विजन है वो उसमें दिखना चाहिए कहीं ना कहीं. ऑलराइट, व्हाट आर द डोंट्स? बेसिकली डोंट ओवर इंजीनियर. ओके, आपको अभी प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. कीप इट सिंपल. डू नॉट हैव द फियर ऑफ फेलियर, है ना, प्रोटोटाइप ही तो है, इट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. ओके, डू नॉट फेल कि अब इतना अच्छा प्रोटोटाइप बनाना है कि मतलब उस अगर ऐसा ना हो कि हम उससे किसी को बुरा लगे या हम फेल हो जाएं, उससे नहीं. Prototyping is for actually failing forward. So you fail forward. You learn from it and you move ahead. Okay? Don't get attached to the prototypes. Okay? है ना, मॉडल से जैसे होता नहीं, वाइवा नहीं होने वाला है उसके बाद, है ना, कि डिफेंड करना है उसको जाके सर के सामने. नहीं, वो नहीं करना है ना. बी ओपन टू चेंज. ये प्रोटोटाइप है, चेंज होने के लिए ही बनाया गया है. ओके? Don't confuse it with the final product, and don't forget it's for learning, not launching. You will never launch a prototype, or you only launch products. Okay? Prototype कभी launch नहीं होगा. ये learning का एक tool है, यहीं तक रहेगा. ठीक है? Okay. Then there's a concept called fidelity in the prototype. Fidelity से हम क्या समझते हैं? Fidelity actually refers to the accuracy. Okay?
तो एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से आगे की बात हो रही है आजकल, वो कह रहे हैं मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि यूएक्स तो है ना, खासकर डिजिटल प्रोडक्ट्स के अच्छा होना ही चाहिए। Nobody expects, even your panelist will not expect a poorly, like a poor interface of a digital, say, prototype. They would say that आजकल इतना आसान हो गया है, इतने टूल्स हो गए हैं ऑनलाइन, 1 घंटे में जाके आप हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप बना सकते हो ऐप का आजकल, ठीक है? It means that you have not put an effort. It will give this impression. So high fidelity prototypes भी आजकल खासकर डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत पॉसिबल हैं और बहुत जल्दी बन सकते हैं। Lot of you, one of them I saw in the वो बना के भी लेके आए हैं अपना, and they have shown the app, which is a working, it's kind of it's an MVP, it's not a prototype. So there are people who can, and इसे बनाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता आजकल। If you have any one single technical person in your team who understands these things, और ये drag and drop बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें जैसे आप you are providing some descriptions and all this. Though it is a prototype, but आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है प्रोटोटाइप का। अब उसमें लोरेम इप्सम वाला डेटा नहीं डालना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन डालना है, लेकिन ठीक है वो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फैंसी नहीं होगा, अभी कॉपीराइट नहीं करवाया होगा आपने, या फिर उसमें बहुत आपने टाइम नहीं स्पेंड किया होगा, लेकिन एटलीस्ट आपने एक सही से एक लाइन लिखी होगी जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगी, उसमें पंक्चुएशन एरर नहीं होगा एटलीस्ट। Okay, all right, so I'm going to show you some pictures and you let me know what is the level of fidelity of this. Okay, let us see. Okay, sketches, are they low fidelity, medium or high? Low. Okay, paper prototype, what about wireframes? High, medium. Okay, all right, product design, wireframes are medium. Okay, product design is high fidelity. Role plays and simulations, high. It's low fidelity. What about storyboards and scenarios? Okay, so it's low fidelity. Yes. So till now, any problem, any questions with prototyping? Got? Okay, got it. Let us move ahead. Let us try to come to the next concept, which is the minimum viable product, and we have been listening to minimum viable product since the first day. Okay. So Faraz, I have to say something about the low fidelity and high fidelity. See, listen to me. If you are going into the service sector or the application development sector, then you can directly go to the high fidelity prototypes because it will be requiring a less amount of money. See, if your startup is hardware based or some product has to be developed, in that case I would love to choose low fidelity prototype in order to validate my solution. So you should avoid going to high fidelity prototypes as far as your hardware based, product based startup is there. It's a very, very valid point. Please understand this, what sir is making here, that प्रोटोटाइपिंग में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। और सर की जो बात है कि देखिए सर्विस टाइप का प्रोटोटाइप होगा, सर्विस टाइप का प्रोडक्ट है अगर, सो उसका हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाना आसान है और सस्ता बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग टाइप का प्रोटोटाइप है आपका, सो इट मे रिक्वायर सम रिसोर्सेज, है ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो उसके लिए ट्राई टू गो फॉर अ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, बिकॉज investing resources before getting the problem solution fit is not advisable. That's what sir is point is making. So very valid point. Please note this point. Okay, thank you sir. Thank you sir. Let us come to the minimum viable product. अब ये इसकी बात तो 3 दिन से हो रही है, सबको क्या समझ में आया इससे में अब तक? Minimum viable product. Basic requirement और उधर से बताएं कोई? Basic features.
Good. Basic features. That's the minimum. But please understand that it was a prototype and this is a product. So it is a product. So it is not a. It is something beyond the prototype. Okay. So first of all, it is not a prototype. It is not a partial or substandard solution. Okay. It is, but it is also not the final solution. So ये इस दोनों के बीच की कहीं बात हो रही है ना? Not a partial substandard solution, लेकिन it's a not a finished solution as well. So ये इसके बीच की बात है. So so MVP, like you said, is a solution which contains essential features, minimum but essential features which can actually showcase or solve the problem of the customer. Or again, like you said, that is why that value proposition canvas was so important. Why? Because you had listed down a lot of pains of the customers and gains also. Now, your MVP may not be having all the pain relievers or all the gain creators. Okay, your MVP will have जो सबसे सीवियर पेन है, जो सबसे पहले सॉल्व करना है ना, उसका पेन किलर होगा MVP में, है ना. बहुत से गेन क्रिएटर्स हैं, है ना. जरूरी नहीं है कि गेन क्रिएटर्स आपके MVP में हो, बट MVP should have the basic minimum, but it is a solution. So it will solve at least the main problem of the customer. लेकिन वो हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं करे, but it will still be solving that problem. And the primary purpose of this is validating. Now here we were validating earlier problem solution fit, और यहां पे हम क्या करेंगे? Product market fit. Okay, so प्रोटोटाइप में हम कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट ढूंढ रहे थे, MVP से हम ढूंढेंगे प्रोडक्ट मार्केट फिट. सो अब ये प्रोडक्ट बन गया. अब हम इसकी देखेंगे कि ये मार्केट में ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा. आर और मार्केट में फिट होने का मतलब क्या है? यहां पे मार्केट में फिट कैसे होगा? प्रोडक्ट डिमांड है, ओके, सेटिस्फाई कर रहा हूं, कस्टमर इज विलिंग टू पे. ओके, मार्केट कब बनती है कोई चीज? जब आप मार्केट कब बनेगी? जब मार्केट तब बनेगी जब उस चीज के लिए लोग पैसा पे करने को तैयार हो जाएंगे, एंड पीपल आर विलिंग टू पे फॉर दैट. इवन अ solution which is not the very best sophisticated solution at this stage, but it is solving their problem and people are getting satisfied at least to an extent that they are willing to pay, maybe not the highest amount, highest value which you are perceiving, but they are willing to pay. And it is also a test to actually determine your pricing and to test whether the value which you have conceived in your value proposition canvas and lean canvas, वो value deliver हो रही है नहीं हो रही कस्टमर को. और वो तभी पता लगेगा कि जब वो पैसा आएगा आपके पास. तो MVP का जो मेन पर्पस होता है वो होता है validation of the product market fit, whether we have developed a product which is fitting into the market or not, and customers are willing to pay for that. Okay, so it has minimum, so it is something between minimum and unfinished product or customer and viable, the final product which is possible. Okay, which is possible. So it is somewhere in between, a product that is good enough to solve the core problem. Okay, at least of the early adopters. And that is why देखिए इससे पहले अगर अर्ली अडॉप्टर्स आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए होंगे तो यहां पे बड़ा आसान हो जाएगा. I'll give you one example here. All of Airbnb की बात हो रही है, 3 दिन से सब लोग पक चुके हैं वैसे Airbnb से, but it's a very interesting actually case. Okay, so when Airbnb was incubated, it was incubated at Y Combinator. तो Y Combinator का नाम सुना आप लोगों ने, है ना? Y Combinator इंजीनियर्स ने सुना होगा बहुत. It was founded by Paul Graham. Paul Graham is basically the person who wrote Lisp language, computer language, Lisp. So Paul Graham started as an experiment. He got some college students who had some brilliant ideas,
And a Y Combinator mein the model is very simple. Okay, they give you some money for your expenses for some time and expenses to actually develop and launch an MVP. That's it. Okay, then you may have brilliant ideas and all. Okay, that's fine. But unless these ideas are with the customers, we are not going to get to know that whether it's working or not. So ये जो MVP का concept है और ये fast development और lean MVP जल्दी से बनाने का, ये थोड़ा सा Y Combinator ने इसमें काफी innovate किया है. So at that time, they developed a very simple basic website. मैं आपको दिखाता हूँ उनकी website कैसी थी Airbnb की, and they were asking, and in fact it's a very interesting idea at that time. It was a peak of the recession 2008, 2008 financial crisis अमेरिका में हुआ था, subprime crisis. American economy was down, and these founders of Airbnb, they actually had to, they were students and they had to attend a conference, and for attending the conference they didn't had the money to pay for hotels. उनके पास पैसा नहीं था कि होटल जाके बुक करें, and they had to travel to some other place. So what they did, उन्होंने Facebook पे अपने ग्रुप्स में मैसेज डाला कि किसी के पास कोई अपने कोई फ्लैट्स में इसमें कोई है, किसी के पास एक बेड एक्स्ट्रा है, कोई बेड एक्स्ट्रा है, for we are willing to pay say $10 per night for that and all, which was way less than the hospital. And किसी के पास कोई spare beds हैं तो हमें आप मतलब we can accommodate us. And luckily they got very overwhelming response from people because everyone was struggling with money, है ना. लोगों ने कहा अरे बहुत से बेड्स पड़े हैं ऐसे. So they started getting this idea, though they started traveling on that, and they went there and they really liked the idea. And one of the hosts, they said that, okay, no, I'm not just offering you this bed, I will also offer you breakfast. Don't worry about it. Breakfast बड़ा simple होगा, cereals or milk I will give it to you, okay, and eggs. That's all. उन्होंने कहा ओ एयर बेड. एंड अच्छा जब वो आप पहुंचे तो वो बेड भी एयर बेड था. एयर बेड देखा है आप लोगों ने जिसमें हवा भरी होती है, तो वो एयर बेड था. तो उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं. तो उन्होंने कहा एयर बेड एंड दिस द नेम एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट. Okay, so that's the name from where they started. So they said that okay, that's the idea they started getting, and they also started hosting people in their flats. So they became the host and then this idea got matured a bit. They developed a website and they incubated in Y Combinator. And once, actually after 1 month, Y Combinator, Paul Graham is a very serious person in the sense that he is a no-nonsense guy. Okay. So they were actually talking to Paul Graham, and Paul Graham said they were struggling with few things. There were not many customers and all those things. So he said, okay, what is, where are your customers? Where are your maximum? So how many customers you have? They said that we have around 100 customers at that time. Okay, where are they located? He asked us very simple question. You are in Stanford. They were actually near Stanford in Silicon Valley, जहाँ पे Y Combinator का फ्लैट था जिसमें सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को उन्होंने एक जगह पे बंद कर दिया था. उन्होंने कहा कि अब आपके कस्टमर्स कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं ज्यादातर. देयर आर अराउंड 60-70 कस्टमर्स आर फ्रॉम न्यूयॉर्क. अच्छा, उससे पहले वहां पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस और कुछ इस तरह के इवेंट्स बहुत हुए, तो ज्यादातर कस्टमर्स उनके न्यूयॉर्क में थे. Paul Graham has a very, very simple question. He said that why, if your customers are in New York, what are you doing here? Pack your bag and go to. You have an MVP. MVP is basically out there in the market. The customers are booking. They must be seeing some value in this, and you don't know what the value is because you're not talking to them, and you don't know what the problem they are facing. You cannot refine this MVP unless you know the problem. You have to get it. So what they did, they booked from their own website. They booked their hosts. They booked some flats in New York, 1 day, 2 days for every for whatever the customers were. They went themselves there. They stayed with them. They had friendship with them, and then they started learning about what their problems they're facing. One of them said that we are not professional photographers. तो क्या होता है, हम अपने घर के अच्छे फोटो नहीं ले पाते. हमें पता नहीं कैसे अच्छे से फोटो लेके अपलोड करना है. तो हमारा हाउस अट्रैक्टिव नहीं लगता. तो पहले कस्टमर नहीं कहा. तो उन्होंने कहा अच्छा, तो दे हायर्ड अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. उन्होंने कहा सारे कस्टमर्स के लिए हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाते हैं. Like this, they improvised. Okay, and what was there? There was an MVP, and it was getting validated. They were collecting some very valuable feedback from the customers. Okay, but that
उस MVP के साथ साथ ये काम भी करना होता है, कस्टमर से दोस्ती करनी होती है। तो लाइक इट सेड, तो पॉल ग्रेहम ने उनसे कहा, इट इज बेटर टू हैव 100 कस्टमर्स दैट लव यू देन टू हैव 1000 कस्टमर्स दैट ओनली नो यू। ओके, इट इज बेटर टू हैव 100 कस्टमर्स दैट लव यू, सो मेक देम योर बेस्ट फ्रेंड्स फर्स्ट, ट्राई टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स, एंड उसके बाद 1000 customers will not be a problem. Okay, similar is the case with lot of these companies, like मैं Honey Twigs की बात कर रहा था, है ना? Honey Twigs has interacted with lot of these moms, and when they created the healthy moms persona, तो product दिया, MVP दिया उनको, और उनसे feedback लिया, उनसे दोस्ती करी, उनसे बड़े-बड़े interviews करे, and from there actually जो उनकी taglines आप देखते हो ना, उनकी website पे जाके देखते हो कि these are the 3 things they offer, वो कहां से आता है, वो खुद नहीं डिजाइन करते कोई, वो चैट जीपीटी नहीं बताता, वो कस्टमर बताता। वो जब एमवीपी चला जाता है मार्केट में, दे कलेक्ट सम रियल गुड डेटा फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड दैट इज व्हाट, वो सारी ब्रांडिंग, सारा जो आप देखते हो ना गो टू मार्केट में उनकी वेबसाइट्स पे जो लिखा हुआ होता है, उसकी जो मेन चीजें आती हैं वो सब कस्टमर्स से आती हैं, वो खुद नहीं आती, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एन एमवीपी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, दैट एमवीपी सिर्फ उसके लिए नहीं बनाया जाता है ना, पिच के लिए नहीं बनाया जाता, उसका रियल पर्पस है कि मार्केट्स में आपको लर्न करना है, एंड देन यू हैव टू रिफाइन द प्रोडक्ट। ओके, एंड दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट। सी, फर्स्ट, व्हाट इज इट? इट इज नॉट अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, एमवीपी ऐसे नहीं बनता है। ओके, सेकेंड इज ऑल्सो नॉट व्हाट एन एमवीपी इज। ये क्या है, वो क्या है? Okay, bicycle is not an MVP for a car. Okay, bicycle has a different customer segment. Customer segment change नहीं होता है MVP डेवलपमेंट में, कस्टमर सेगमेंट सेम रहता है, कस्टमर से फीडबैक लेके प्रोडक्ट चेंज होता है, प्रोडक्ट के फीचर्स चेंज होते हैं। आ रहा है समझ में इस फिगर को देख के? ओके, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है हर बार, कार का जो कस्टमर सेगमेंट है और बाइक का जो कस्टमर सेगमेंट है बिल्कुल डिफरेंट है। द लास्ट पार्ट इज वेयर एक्चुअली एमवीपी टेक्स प्लेस, कि यू आर इम्प्रोवाइजिंग ऑन द कार। पहले एक क्रूड वर्जन था कार का, फिर उसमें और कुछ चीजें ऐड हुई, उसमें ट्रंक ऐड हुआ, फिर उसका थोड़ा शेप चेंज हुआ। दैट इज व्हाट इज एन एमवीपी। There are there some real examples? Let us look some real examples. सब मजा आएगा, ठीक है? कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में है एमवीपी का? अब बताइए, सर्विस कंपनी का एमवीपी कैसे बनाया जाता है ना? सर्विस, रेड बस का नाम सबने सुना है ना? यूज भी करा है, किस किसने करा है? ठीक ठाक लोगों ने किया है, ठीक है। रेड बस नहीं, product is different completely, the market segment is different actually. No, but segment is same, but segment is not same actually. वो एक अलग तरह के कस्टमर सेगमेंट के लिए है, it's for urban houses, it's for basically people, थोड़ा सा हाई एंड है, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत डिफरेंट होती है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। जो कछुआ छाप उसकी बात कर रहे हो ना आप, वो मोर्टीन कॉइल की जो कॉइल आते हैं, तो वो उसकी मार्केट सेगमेंट डिफरेंट है, ठीक है। The founders of Redbus, what they did, okay, Redbus आज बहुत बड़ा ऐप बन गया है, it's a big मतलब $1 million company and so forth. But how it all started? They addressed just one main pain point of the customers, and they did it in a very simple manner. एक simple सी functionality बनाई थी, उसमें उन्होंने partnered with very few bus operators, and उनकी जो seats की vacancy थी और उनके जो routes थे, बस वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके they tried to sell it at a premium, basically at a commission based. That's all they did. And once they started getting the feedback that people are coming back to them, they are asking things, and what do they want? They want the timing, they want and the things which they wanted. और आज जो आप देखते हो जो उनकी फंक्शनैलिटी है उसमें सब चीज है, ठीक है।
तो MVP से स्टार्ट हुआ. Zappos का example is a very interesting example. Zappos is a very big brand in America selling shoes online. Okay, and the founder, what they did, he went to one store simple. उनसे कहा कि I am developing a website. अभी उसे पता नहीं था उस मायने में कि people will buy shoes online or not. अभी shoes नहीं बिके थे online. सिर्फ Amazon वो बेच रहा था, CDs and books and all. तो उन्होंने क्या करा, उनसे कहा कि मैं आपके शोरूम से जितने आपके शोरूम में जूते हैं उनका सबका फोटो लेके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूंगा एंड आई विल ट्राई टू सेल इट. अगर वो बिक जाएगा तो आई विल कम बैक, आपका मैं शू आपको पैसे दूंगा, कस्टमर मुझे पे कर देगा ऑनलाइन, मैं आपको पैसे दूंगा और मैं उसको शिप करके कस्टमर को भेज दूंगा. एंड आई विल जस्ट टेस्ट वेदर द कस्टमर्स आर बाइंग शूज ऑनलाइन एंड दे आर व्हाट दे वांट. ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सिर्फ एक शोरूम से उसने जाके टाई अप किया, उनके सारे शोरूम्स के जूतों को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया और अपनी मेलिंग लिस्ट में उस वेबसाइट को सेंड किया, कुछ प्रमोट किया थोड़ा सा एंड स्टार्टेड गेटिंग फीडबैक. जैसे उन्हें कोई दिस इज अ वेरी अनसस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अगर आप एक डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं, सो इट इज नॉट द आइडियल वे योर ऑपरेशंस विल रन, बट इट इज द मिनिमम बिकॉज अल्टीमेटली द वैल्यू विच द कस्टमर इज गेटिंग, वो थोड़ा सा डिले होके पहुंचेगा जूता, लेकिन पूछा पहुंचेगा, है ना, उनके पास. And you can get the real feedback. So that's how they did it. Okay, and there are some very interesting. This is the first MVP of Amazon. Can you imagine? Welcome to Amazon Books. That's the MVP of Amazon. Okay, but it got them going. It got them the data. So there's a company called Buffer. नाम सुना है? They're a very famous company. It's a $1 billion company now. You can schedule all your social media updates and posts and everything in one go. You can schedule it for a whole month. Okay, that's the idea. बहुत सारी companies ने इसको copy कर लिया है. But Buffer, they said that okay, it's a very simple one. देखिए आप उसका before, what was it? It's a simple website. Just 3 solutions which are talking about 3 plans. Just select one plan, and now the website looks something completely different. And it has a lot of other things, a lot of features, a lot of different plans and all these things. Started with a very simple. Dropbox. This was the first version of Dropbox. एक simple website, बहुत ही crude सी website है. And this was basically अब you can see the new versions. Airbnb, this was what I'm talking about. एक बिल्कुल simple website. कब से कहाँ पे check-in date, check-out date, number of guests, where are you going, that's all, and a picture of basically some of the ads were also there. अब Airbnb पे ऐसे ads नजर नहीं आते हैं आप लोगों को. Okay, and now it's very different, very elegant. Okay, Twitter, see the earlier version of Twitter. Okay, Spotify. See how Spotify used to look like first. Welcome to Spotify, a music experience. That's all. और सीधे इतनी कुछ भी नहीं था कंटेंट, सीधे जॉब्स के लिए भी पोस्ट कर रहे थे. ठीक है, दैट वाज अ वेरी सिंपल वैल्यू प्रोपोजिशन. और आप देखिए आप, सो देन Duolingo, famous app today for learning languages and all those things, started as a very simple gamified thing. Simple एक चीज से स्टार्ट किया बस, but conveyed the value, got the feedback, improvised. Okay, so there are some differences. Like I said, we need to remember the differences. Prototypes are usually tested by internal teams, but can also go to some customers to get feedback. Low to medium level fidelity होता है इसमें. Goal is validation of the design, the solution. Okay, MVP जो है is basically targeted to the end users, but it's usually targeted to the early adopters only. First of all, try to get to early adopters, and the goal is to check the product market fit or product customer fit, you can call it. Okay, similarities in both of them. These are testing tools. Both of them have some hypothesis in mind, and then you validate those hypotheses. आप क्या चाहते हो और customer क्या कर रहा है ultimately. उसका डेटा आपको कलेक्ट करना है, and it enables you to iteratively develop the final product. इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल मिनिमम लेके चलना है. प्रोटोटाइप में तो और कम करना है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत करना है. आजकल
टाइम स्पेंड करोगे तो यूएक्स अच्छा हो जाएगा, है ना। और कल एक सेशन है यूएक्स पे, वो देखिए एक्सपर्ट आएंगे, कुछ बताएंगे यूएक्स, ओके। और आजकल आपको ये टेक्नोलॉजी रेडीनेस ये भी बताना पड़ेगा आपको अपने स्टार्टअप के बारे में, ये उसमें आपकी उसमें पिच डेक में भी है कि एट व्हाट स्टेज यू आर इन, ओके। सो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, टीआरएल लेवल। सो एटलीस्ट प्रोटोटाइप और वैलिडेशन में, प्रोडक्शन में तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आपसे अभी, है ना। तो यहां पे होना चाहिए आप बीच में कहीं पे। एंड यू नो द स्टार्टअप वर्ल्ड, it is though like Manmohan ji will tell you that how the schemes are evolving and all, but it's also maturing very fast. India is a big country. यहाँ पे हमारे पास एक चीज abundance में है, क्या है? Population, है ना, तो एक चीज अब आ जाती है ना तो फिर सब उसमें लग जाते हैं, है ना। हम लोग आर्मी में भेज देते हैं लोगों को लड़ने के लिए, तो ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अब मैच्योर हो रहा है सिस्टम, और जब लोग ज्यादा आते हैं तो ये जो मैच्योरिटी लेवल देख रहे हैं ना आप इसमें, अब उसी पिच कंपटीशन में पहले सिर्फ आइडियाज आते थे, अब प्रोटोटाइप्स नहीं आते, अब एमवीपी के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स भी लेके आ जाते हैं लोग, ठीक है। तो लोग हर स्टेप, जैसे पहले क्या होता था ना, कोई 10th क्लास कर लेता था उसको नौकरी मिल जाती थी, अब पीएचडी के बाद भी देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी होती है, तो इसलिए यू हैव टू बी लाइक रियली स्मार्ट एंड स्टार्ट गेटिंग टू द नेक्स्ट स्टेज क्विकली नाउ, ओके। All right, so I will just take 2 minutes more before so this is basically some additions which I wanted to make you, because a lot of you will be doing some technical startups, है ना, and you are going and you are also participating in this SIH, okay. So how do technical startups show their MVP or prototypes, okay? Sometimes they are very heavy prototypes, so इनका प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा रिवर्स होता है। फर्स्ट आपको टेक्नोलॉजी की रेडीनेस जरा अच्छे से दिखानी होती है, एंड यूएक्स को आपको थोड़ा समझाना होता है, बट प्रॉब्लम पहले डिफाइन करनी है इसमें भी। ऐसा नहीं है कि इसमें सीधे आपको मॉडल ही दिखाना है जाके, लेकिन इसमें भी पहले वाला पार्ट जरूर करना है। लेकिन आप कैसे कैसे दिखा सकते हो, देयर आर सम एग्जांपल्स हियर, ओके। First, there's a company called Boom. Okay, so how they showed that they had their MVP, and how they showed that they are capable of doing it. So they assembled a top team of advisors, and they built a computer simulations. उन्होंने computer simulations बनाए अपने product के, and built a plastic model, 3D model बनाया, and showed it to the customers in fairs. जो टेक्निकल कस्टमर्स हैं, जो कि जैसे फेयर्स लगती हैं, जो प्रगति मैदान में और इसमें जाके फेयर्स लगती है ना, वेयर बिजनेसमैन कम्स, और टेक्निकल फेयर्स लगती हैं, दे शोड इट टू द कस्टमर्स एंड कलेक्टेड द फीडबैक, एंड समटाइम्स दे मोर देन दैट आल्सो इज कलेक्टेड, है ना। some commitment, kind of commitment, which is called letter of intent. I'll talk about that letter of intent of buying in the later stage if you develop it, है ना। उसमें कंपनी का भी कुछ नहीं जाता, बट आपके लिए वैलिडेशन हो जाता है to show it to the investors and all. So Boom did this. There's a company called Solution. Solution actually has a huge chemical plant. So they started very, very small. What they did, they showed the whole process in a small setup, with just a beaker, that how they are going to make these chemicals. Because ये technical product है और उसको validate करना technically भी जरूरी है। अक्सर आप जाएंगे incubation के लिए, if you have a technical product, they will ask for the technical details or whether it has passed the technical tests. So for example, there was a startup 1 week back, we were evaluating a startup. They had developed some new kind of burner, जैसे गैस बर्नर होता है ना, चूल्हा होता है, वो नए तरीके का चूल्हा जिसमें कुछ वेस्ट से वो चूल्हे को मतलब पावर कर रहे थे। The problem was that with the startup, उन्होंने लीन कैनवस भी बना रखा था, सब बना रखा था उन्होंने, और कस्टमर इंटरव्यूज भी कर रखे थे, है ना। गए के लोगों को जरूरत है, हाँ, जो गरीब किसान हैं या फिर इस तरह के जिनको जो ऑल्टरनेटिव पावर सोर्सेज यूज करते हैं, लकड़ी जला रहे हैं या वो, तो उनसे उन्होंने इंटरव्यू भी ले रखे थे। बट द प्रॉब्लम वाज दैट उनके पास उसके गैशियस आउटपुट का डेटा नहीं था कि वो क्या एफ्लुएंट्स निकलेंगे उसमें से, वो कितने हार्मफुल होंगे, है ना।
तो they were saying that we have approached, तो combustion expert नहीं था उनकी टीम में कोई भी, या उन्होंने किसी combustion lab में जाकर उसको टेस्ट नहीं किया था. They were saying that we in the process, और वो पिच करने आ गए थे. तो सबसे ज्यादा पैनल का इसी पे सवाल था कि आप ऐसी चीज लेके आए हो जिसमें कुछ एक्सटर्नलिटीज हैं, और उन एक्सटर्नलिटीज की अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या पता ये ज्यादा पोल्यूशन कर दे, हम तो क्लीन की तरफ जा रहे हैं, आप पोल्यूशन ज्यादा कर दें तो क्या होगा. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो आपको ये टेक्निकल उसके मे बी राइट अ पेपर ऑन दैट, मे बी वैलिडेट इट समहाउ, कंप्यूटर सिमुलेशन से आप इससे दिखा सकते हो. तो इवन सम ऑफ द जजेस सजेस्टेड देम दैट आप इसका अगर आप लैब में से टेस्ट करने से आप सिमुलेशंस करके देखो पहले कि इससे क्या इफ्लुएंस निकलेंगे. ठीक है. जैसे कंपनी कॉल्ड एयरएक्स, तो ये मेडिकल डिवाइस बना रही थी अमेरिका में. इट्स नाउ फंडेड स्टार्टअप, वेरी वेल फंडेड. इन्होंने देखा कि 3 साल लगते हैं एफडीए अप्रूवल में. अगर कोई नया मेडिकल इक्विपमेंट लॉन्च करोगे तो जो आपको उसका जो लाइसेंस लेना पड़ता है वो करना पड़ता है, 3 साल लगते हैं उसमें. सो व्हाट दे डिड, दे यूज एन एग्जिस्टिंग मेडिकल डिवाइस और उसके ऊपर उन्होंने दे रोट अ सॉफ्टवेयर. दे रोट अ सॉफ्टवेयर देमसेल्व्स, द फाउंडर्स, एंड उसमें कोई जीरो अप्रूवल नहीं था क्योंकि वो उसका एडिशनल एक वो था, है ना. उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर दी, एप्लीकेशन लेयर एक नई. ठीक है. दैट्स ऑल दे डिड. लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, इनफैक्ट अगर आपको इसका एक बहुत एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, आप लोग सब समझ जाओगे कि बड़ा स्मार्टली एक कंपनी ने प्ले किया था इस तरह से, है ना. एक ऑलरेडी ओपन सोर्स चीज के ऊपर एक नई एप्लीकेशन लेयर लगाई, स्मार्टली क्रिएटेड अ मार्केटिंग मॉडल. एंड एंड्रॉइड, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, वो एक जमाने में अभी कोविड में ना उसका बड़ा नाम हुआ था, और उसने अपने आप को बहुत कई $100 मिलियन में अपने आप को बेचा, और जिसको बेचा वो बैंकरप्ट होने के कगार पे है, बायजूस को, व्हाइट हेड जूनियर. वेरी स्मार्ट करण बजाज, व्हाट ही डिड, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म code.org जिसपे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल था, उसके करिकुलम को लेके उन्होंने अपने अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाए और उन्होंने कहा कि हमारे टीचर्स ऑनलाइन ये करिकुलम पढ़ाएंगे. बस द मॉडल वाज दिस, दैट्स ऑल. ओके. ओपन सोर्स था सब चीज, एग्जिस्टिंग था. एमवीपी क्या था उनका, उन्होंने उसको टेस्ट करा, उन्होंने उसके ऊपर कुछ टीचर्स रखे और टीचर्स वो बच्चों को वही code.org का करिकुलम ऑनलाइन पढ़ाते थे जूम पे. दैट्स ऑल, है ना. एंड पीपल स्टार्टेड पेइंग. इट्स फॉर कोविड, एवरीवन वांटेड देयर किड्स टू बिकम जीनियस, है ना. वो उन्होंने उस आइडिया को सेल किया एंड दे सोल्ड दैट कंपनी टू ब्रिलियंट वैल्यूएशन, है ना. ही वाज अ स्मार्ट पर्सन. बायजू ने उसे बहुत पैसा दिया, और अभी ना व्हाइट हेड जूनियर का पता है, बायजू का भी कल पता नहीं है क्या होगा. वो एक अलग स्टोरी है ना, वो एक अलग स्टोरी. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू हैव टू बिल्ड समटाइम्स थिंग्स ओवर व्हाट ऑलरेडी हैज बीन डन. जैसे आजकल हो रहा है टेंसर फ्लो है ना. ये पहले सब नहीं थी ना ये चीजें, है ना. ये लाइब्रेरीज नहीं थी. एंड नाउ बिल्डिंग एन एप्लीकेशन लेयर ओवर दीज आर वेरी 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 इजी. Infrastructure is there, so you can do that. Notable Labs is another company. Okay, they had a long-term vision to develop new drugs for cancer. Okay, but what they did, they had to provide tumor screening services. तो जैसे बहुत से लोगों के बड़े ambitious ideas हैं आप में से, है ना. So you can, अगर कोई बहुत ज्यादा ambitious idea है जिसमें बहुत MVP में बहुत पैसा लगने वाला है, so you can just think about a more recent use case उससे रिलेटेड, और अपने टेक्निकल स्किल से रिलेटेड यूज केस है, उसको पहले आप टेस्ट कर लो. जब पैसा कमा लो तो उसको वो कर लेना. ऐसे इलॉन मस्क ने भी किया था. ठीक है. ये टेस्ला वेस्ला के आइडियाज उसके बहुत पुराने थे, बाद में किया. और टेस्ला का मैं बड़ा इसी में आपको मैं एग्जांपल देता हूं. टेस्ला, यू नो व्हाट द फर्स्ट टेस्ला वाज, उसने गाड़ी नहीं बनाई कभी. टेस्ला, नो, व्हाट वाज इट? Elon Musk actually became a co-founder of Tesla by buying into Tesla. Tesla was not founded by Elon Musk. What he did, जो उनका first गाड़ी का version था, what was an MVP? It was Lotus. There's a brand called Lotus. उनकी गाड़ी को लेके they modified that car into an electric vehicle. Okay? उसमें सिर्फ उन्होंने बैटरी फिट करी, वो बड़ी स्मार्ट लुकिंग कार थी, है ना. And they showcased that car in and booked orders. उन्होंने फेयर में उसको शोकेस किया, उन्होंने कहा दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक, है ना. रोडस्टर, टेस्ला रोडस्टर ऐसी लगेगी. तो एग्जिस्टिंग गाड़ी को लिया,
उसको मॉडिफाई किया अपने विजन के हिसाब से, दैट वाज अ MVP, है ना. प्रोडक्ट था, वो चल सकता था, प्रोटोटाइप था बेसिकली, उसने प्रोटोटाइप पे ही पैसा इकट्ठा किया था. एंड देन दे स्टार्टेड बेसिकली डेवलपिंग दैट, मॉडिफाइंग. जो इंजन था वो लोटस का था और लोटस से उन्होंने इस पे वो किया था. तो टेस्ला ऑल्सो डिड द सेम थिंग. एंड इलॉन मस्क हैड ऑल द रिसोर्सेज, उसके पास कई $100 मिलियन थे, वो कर सकता था, लेकिन उसने तब भी नहीं किया. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है तभी हमें करना है, जिसके पास होता भी है, द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज गोइंग फॉर एन MVP. ओके, तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एस्ट्रानिस. ये पता है आपको क्या है? ये देखिए क्या है ये. This company is into space technology. It's a nano satellite. ये एक nano satellite. They launched this nano satellite, built this satellite just in 3 months, fastest ever, and they showcased this as an MVP of their capability to build a bigger satellite. Okay? As a startup team, they showcase. देखिए टेक्निकल प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी your team is capable of doing it or not. ये भी सवाल होता है कि यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ बिग क्लेम दैट आप ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज बना रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन अभी आपकी टीम भी वैलिडेटेड नहीं है. यू आर अ स्टूडेंट, सो हाउ विल यू शोकेस दैट? सो दैट इज अ क्रिटिकल थिंग. ओके, देन दिस गिंको बायोवर्क्स, sell it before you make it. What they did? They actually can you sell it before you build it? Pre-orders, and pre-orders are also important. Okay, so what you do, there is a concept also called letter of intent. For lot of technical startups, lot of companies do that, है ना. जैसे आप fairs में गए, you have a brilliant technical solution, a proof of concept which we call it. उसके पास आप technical papers भी हैं आपके पास, बहुत से लोग आप लोग करते हो, अपने प्रोफेसर्स के साथ करते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, ये सब है, वो सब है ना. उसके बाद you developed a prototype and an MVP and you showcase that in a fair, in a proper fair, and you collect from some good industries or potential customers, you collect letter of intent कि अगर हम ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं with these features at this price range, we intend to buy this at within this period. Okay, वो एक टाइम बाउंड टाइप का एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है. नॉन बाइंडिंग है, वो कंपनी मना कर सकती है बाद में, बट आपके लिए वो एक बहुत वैल्यूएबल चीज है टू शोकेस इट टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, टू अदर कस्टमर्स, दैट ओके दिस कंपनी हैज ऑलरेडी इज प्री कमिटिंग टू अवर टेक्नोलॉजी. ओके, and it can be further showcased to other customers, and then you can create more buzz around that, and you can showcase it to the investors as well. So good letter of intent में थोड़ा specific चीजें रखनी है, जैसे how much units they will buy, the price they will pay, when will they buy, the specs किस तरह के उसके specifications होंगे product के. So these are some of the things. Okay, so I hope this till now everything is clear. There is so I'm going to skip this part. So we have covered so far these all kinds of prototypes. Okay, so we have paper and very low fidelity prototypes and mock-ups. We have role plays which we can use for service type of prototypes, simulations which we can use, and also physical mock-ups. All right. Okay, any questions around this? Any questions? Yes. TRL, technology readiness level. Okay, so you can see this. This is usually a technology readiness level which is used by AICTE, also uses it. All the incubation centers today use this to assess whether, especially for technical solutions, at what level you are in terms of technology. Okay, so when you pitch before the panel, there is a slide also of technology readiness. Okay, if you have a prototype ready or not, at what stage it is. So it's a small scale prototype, large scale prototype,
and these kind of things. So usually you can say that we have reached this level, we have covered these 3 parts, and we are at TRL level. Usually there are 9 levels, so you are at TRL level 6 or 5 or 7 or whatever. Okay. Incubation centers usually do not expect you to be above say 5 usually. Okay, they expect you to be somewhere 3-4 के बीच में है, तो they will give you some money for prototyping. Prototyping की स्कीम भी है ना, उसमें स्टार्टअप इंडिया में स्कीम भी है प्रोटोटाइपिंग की. निधि करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की बहुत मशहूर, वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए खासकर वो प्रोटोटाइपिंग के लिए पैसे देते हैं निधि. सो दिस टेक्नोलॉजी रेडीनेस के हिसाब से ही वो आपको जज करेंगे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? So we will have a detailed session around the low fidelity prototype tomorrow also. Okay, and there's a lot of other sessions tomorrow around working session around prototyping, designing. Okay, now before I end today's this session, I close this because you have an incubation visit after lunch. I want to tell you that today you have a task also. So you have to complete your presentation till at least before the lean canvas. Before the lean canvas, okay, at least. Lean canvas भी है उसमें अगर preliminary version, तो it is very good. Okay, जो pitch deck मिला है आपको उसमें, so you open your Ignite platform. So there are 3 milestones given there. First वाले को ignore कर दीजिए, जो पहला है, ठीक है, baseline, वो आपको नहीं करना है, वो SIH वालों के लिए होता था, ठीक है. Second वाले में वो आज रात तक सब लोगों को अपलोड करना है. You are back from your incubator visit and everything. Cultural program भी है मैम, शायद आज cultural program, relax. लेकिन जिस भी लेवल का वो बन गया है आपका, उसे आज रात में अपलोड करना है. Getting my point? Okay. And volunteers, there are no volunteers here. हैं कुछ पीछे बैठे हुए हैं या चले गए बाहर? Okay, they are busy preparing. So at least you are here, you listen to this and just let them know. Volunteers have to make sure that उनके पास जो teams हैं, they submit it by tonight. So वो portal पे reflect होगा कि आपने submit किया नहीं किया. Okay, so you have to submit. It's one deliverable. आज milestone 2 जो है वो रात में सबका submit हो जाना है. बहुत ज्यादा घबराइए नहीं उसमें. अगर कुछ चीज incomplete भी है, just submit it. Okay. But the final one has to be the perfect one, on which you will be evaluated. इसमें आप evaluation, इसमें feedback मिलेगा, इसके basis पे आप evaluate नहीं होंगे. Okay? So please do that. All right. Thank you. Thank you, sir. Now I would like Kavita ma'am to please come on stage to brief us about the incubation center visit and the university visit. Good afternoon, students. I'll just take a minute. Please do be seated. We have this incubation visit right after the lunch. For that, we have divided you into 5 groups. आपके जो स्टूडेंट ग्रुप है उसमें आपके पास लिस्ट आ गई है, उसमें आपके ग्रुप का नाम लिखा हुआ है. आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, नीचे खाना रेडी है. वंस यू हैव योर लंच, प्लीज try and quickly finish your lunch and come out because there is lots that we want to show you. ऑडिटोरियम के बाहर जैसे ही आप खाना खा के निकलेंगे, ऑडिटोरियम के बाहर टीम लीडर्स आर स्टैंडिंग विद द प्ले कार्ड्स. प्ले कार्ड्स में ग्रुप नंबर्स आर डिस्प्लेड. आप अपना ग्रुप नंबर के हिसाब से अपने टीम लीडर के पास जाइए. टीम लीडर विल कंडक्ट द विजिट. हमने आपको 5 ग्रुप्स में करा है, इसलिए 5 ग्रुप का हमने एक रूट भी डिसाइड करा हुआ है दैट योर टीम लीडर इज अवेयर ऑफ. सो डू नॉट लूज योर ग्रुप, स्टे विद योर ग्रुप ताकि आप अपना जो राउंड है वो कंप्लीट कर पाएं. देयर आर 5 प्लेसेस विच वी आर गोइंग टू विजिट. वी विल बी विजिटिंग द सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. Then there is Integral Computer Center. All these are part of the incubation center of Integral University. So then we'll be taking you to our computer center, then to the robotics lab, then to the workshop and the center for instrumentation, central instrumentation facility. So route map for all the groups are different.
So it's not like that you all 300 of you will be taking the same path, but you will be covering all these 5 places subsequently. If you have any questions, you are always welcome to ask those questions at these facilities. But then we have to understand that we do not have very long time. I mean, we have to finish it within a particular span of time. So if your curiosity is not satisfied within those 10 or 15 minutes which you are spending in the facility, you can always come back and ask your questions later on. So I will not take your time. I'll not take more of your time. But another request, we request you to be with your team. Please do not lose your team. Please follow the instructions given to you by your team leader and at the facility where you are visiting, because at some of the places there are some safety instructions to be followed. So let us have a very meaningful visit. Let us enjoy it. And that's it. Thank you so much. Thank you, ma'am. After lunch and the incubator visit, there would be a cultural evening scheduled from 3:30 p.m. So kindly join us. If anyone wants to showcase their talent, we all welcome you to come on stage. If contact volunteers backstage. Thank you. Attention please. All the student, all the participant, if anyone wants to showcase your talent, kindly contact at backstage, okay? One more thing, we'll meet at 2 p.m. sharp for the visit. So we have half an hour for the lunch.